सो बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी का देवी और सज्जनों, हमारे आज के फाइनेंशियल पाठशाला के अमृत जी के साथ एक्सक्लूसिव और स्पेशल सेशन में। वंस अगेन जस्ट रिमाइंडर, फोर्थ पाठशाला जो होती है महीने की, एज यू ऑल ऑलरेडी आर ईगरली जॉइंड ओवर हियर, इज फॉर अ वेरी वेरी वंडरफुल मीटिंग विद अ बुक थ्रू अमृत। सो हम हमेशा ऐसे कहते हैं कि कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि हम छोटे थे तब हमारे कहानियों की दुनिया में ले जाने वाले हमारे पेरेंट्स थे या हमारे दादा दादी थे। या वैसे ऑब्वियसली अमृत को हम दादा दादी जैसे तो नहीं कंसिडर कर सकते बिकॉज ही इज वेरी यंग, एंड बट डेफिनेटली ही इज दैट वन पर्सन। वो एक रोल जो होता है, जो दर्पण दिखाता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे, एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट करके लेके जाते हैं। सो आई थिंक अमृत एंड हिज वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड कॉन्वर्जेशन इज सच दैट हम सभी को वो उस बुक्स की दुनिया में और ऑथर्स की दुनिया में लेके जाते हैं। बट उससे पहले हम सबसे पहले, एज आर नॉर्म इज, एज इज आर प्रेयर एंड आर डेली डिक्लेरेशन रूटीन, हम सबसे पहले हमारे प्रेयर्स में जुड़ेंगे और फिर आगे आज की बुक क्या है और आज के दो सेशंस है तो दोनों सेशंस में क्या हम जानने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे। सो टिल देन प्लीज जॉइन मी इन प्लेसिंग योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट्स एंड फॉलोइंग मी इन द रीडिंग ऑफ आवर डेली डिक्लेरेशन। We are on a mission to educate and empower people about financial literacy and empower them to live a financially confident and stress-free life through our 7 events to financial freedom approach. We are in the world's best and noble profession because we prosper when our clients prosper. We are the followers of client first, we next, and the win-win-win principle. We always ensure that our clients get the right amount of money available to them at the right point of time through our scientific money management process. We follow all professional ethics with full integrity. We achieve all our life goals to help our clients achieve their life goals. We have a clear intention to create wealth and abundance so that our clients can achieve all their dreams, goals, and needs. The only way we can become successful is by adding massive value in the marketplace to our clients, to our organization, and to all our stakeholders. We always inspire, empower, and make a difference in people's lives wherever we go and whomever we meet. We work because we choose to and not because we have to. And we empower people to live their desired lifestyle by helping them achieve financial freedom. So with that, friends, give a powerful and energetic high five to the partners sitting in front of you so that you, them, and all of your clients become financially free as early as possible. और इसी के साथ चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। So सबसे पहले I will give you the flow of today's program. Obviously, starting May, we will be having Amrut, who is going to be speaking on a wonderful, wonderful, wonderful book and a very wonderful topic, which I feel is relevant for everybody. उनका एज छोटा हो, उनका बड़ा हो, वो अपने करियर में आगे हो या करियर में मेरी तरह जस्ट स्टार्ट कर रहे हो। तो ये ऐसा कौन सा टॉपिक है जो वन साइज फिट्स ऑल वाले साइज के कैटेगरी में आ रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये जो बुक है उसका नाम है थैंक्स फॉर द फीडबैक, द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिसीविंग फीडबैक वेल। तो काफी सारे लोग जो होते हैं जो रिसर्च में या डेटा एनालिटिक्स में काम करते हैं या किसी क्लाइंट फ्रंट फेसिंग या कस्टमर केयर वाले जॉब में, एंड मेनी ऑफ द एडवाइजर्स, हमारे रोल्स के अंदर ये सारे एक्टिविटीज आ जाते हैं और हमें क्लाइंट्स के पास से क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, या हमारे किसी रिलेटिव के पास से उनको क्या अच्छा लगा, शायद कुछ बातचीत में हंसी मजाक में कुछ ऊंच नीच हो गई, कुछ उनको बराबर नहीं लगा, तो हमको आके कुछ बताएंगे। अभी वो फीडबैक को हमें कैसे लेना है या किसी को कैसे फीडबैक देना है और क्या मायने रहते हैं ये फीडबैक के, इसके ऊपर अमृत से हमारा आज एक बहुत ही बढ़िया डिस्कशन होने वाला है। एंड उसी के साथ आज शाम को 8 बजे धर्म सर एक स्पेशल डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले हैं बिजनेस क्लैरिटी कैलकुलेटर के ऊपर। सो हम कभी भी कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, तो हमें क्लैरिटी की जरूरत होती है। इनफैक्ट फीडबैक देते हैं तो उसमें भी क्लैरिटी की जरूरत होती है। तो वैसे ही हमारे बिजनेस में हमें कैसे क्लैरिटी करनी है और उससे कैसे हम हमारे जो एक ड्रीम फिगर्स होते हैं या एक ड्रीम एक एरिया होता है, ड्रीम रीजन होता है कि मुझे इतना बिजनेस करना है या मुझे ये लेवल पे अपने काम को लेके जाना है, उसको कैसे हासिल कर सकते हो, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने वाला एक कैलकुलेटर देने वाले हैं। तो विद दैट लेट मी इंट्रोड्यूस अमृत, जिनको वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है हमारे ऑडियंस के अंदर। ही इज अ वंडरफुल वंडरफुल स्पीकर, 40 लाख से ज्यादा लोग अब उनसे जुड़े हुए हैं, एंड ही इज अ टेडx स्पीकर, यूथ आइकन अवार्ड भी वो जीते हैं 2020 का। बट आई थिंक लेट्स लेट हिम डू द टॉपिक
and let's let him do the talking. So with that, Amrut, the stage is all yours. Thank you. Thank you so much. As usual, a very enthusiastic evening. In fact, nowadays I look up for the fourth Thursday of every month. You guys are like for me. Yeah. So I just check the screen. So once I get charged on every fourth Thursday of the month, and because of you guys, I've started reading now more than one book a day. Not every day, but कभी कभी एक book एक दिन में दो तीन books भी पढ़ लेता हूँ मैं. Today I read in fact two books since morning. Okay, a very interesting book. Thanks for the feedback. तो क्या सोच सकते हैं कि एक फीडबैक जैसे टॉपिक पे किसी ने पूरी किताब लिखी है. And the authors are Douglas Stone and Sheila Heen, who have also written the book Difficult Conversations. अगर आगे टाइम लगे तो कभी हम ये बुक भी लेंगे डिस्कशन के लिए. The subtitle of the book is very interesting. It's long, so let me read it out. The science and art of receiving feedback well, even when it is off base, unfair, poorly delivered, and frankly, you're not in a mood. So feedbacks, I'll tell you how I discovered this book. It's a very interesting story. How I choose books. The most common question I get, कि तुम ये ऐसे books कहाँ से ढूंढते हो? जरूरी नहीं कि वो best seller हो. So, of course, we Google, मैं Google भी करता हूँ, but I don't just rely on Google. गूगल के चक्कर में वी फॉरगेट दैट वी आर इन लिविंग इन अ फिजिकल वर्ल्ड एंड वी हैव आवर ओन वर्ल्ड अराउंड अस इन ऑफिस, इन द जिम, एट होम, इन द ट्रेन, इन ओला, या इन द गार्डन, यू वेर यू गो फॉर द वॉक. दिस इज योर वर्ल्ड. एंड सो उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है. तो एक बार क्या हुआ, आई वॉज इन द जिम, आई वॉज वर्किंग आउट, देयर वर ट्विन ब्रदर्स. दो जुड़वा भाई थे और दोनों कुछ बाइसेप कर्ल्स मार रहे थे, वो डब्बे लेके ऐसा मार रहे थे. तो वहां से एक इंस्ट्रक्टर आया, उसका फर्स्ट डे था इंस्ट्रक्टर का, नया चेहरा था. तो दोनों मेंबर शायद कुछ गलत मार रहे थे, बहुत फास्ट मार रहे थे. फास्ट मारने से कुछ होता नहीं है मसल्स को, स्लो मारना चाहिए. तो ट्रेनर जो था नया नया, उन्होंने दोनों को बोला कि सर आप थोड़ा ना स्लो मारिए और पूरा यहाँ तक लाने की जरूरत नहीं है, डम्बल को थोड़ा यहाँ तक लाओ एंड then it will help you more. And you know what happened? So उसने feedback तो दोनों को दिया, same to same. One brother, he said, oh wow, thank you, ये मुझे पता नहीं था. Okay, I'll rectify. और दूसरा, he got furious. बोला तेरे को क्या एक दिन आया तो ज्यादा शाणा समझता है क्या? 3 साल से मैं जिम में आ रहा हूँ, तो सब समझता क्या अपने आप को? I'm going to complain about you. And that triggered me कि अरे बाप रे, the same feedback was taken so differently by twin brothers. Same family, same time born. One took the feedback as evaluation. The other took it as a personal attack on his ego, as a personal criticism. And that made me thinking, can there be a book on feedbacks? So this is how I discover books. I don't find them, I discover them through my daily observations, conversations. एक हफ्ते मेरा क्या हुआ, एक महीने पहले मेरा पिताजी के साथ झगड़ा हो गया, जैसे थोड़ा सा तू मैं वगैरह जो घर घर में होता है. एंड देन आई रिग्रेटेड कि अरे यार पिताजी को ये बोलना नहीं चाहिए था कि अभी इतने बूढ़े हो गए. सो आई रिग्रेटेड. देन आई थॉट कि ये आर्ग्यूमेंट्स पे कोई बुक है क्या? इज आर्ग्यूमेंट हेल्दी और नॉट? व्हाट इज द राइट वे ऑफ आर्ग्यूइंग? एंड देन आई गॉट अनदर बुक कॉल्ड थैंक्स फॉर आर्ग्यूइंग. जैसे थैंक्स फॉर द फीडबैक है, उस बुक का नाम था थैंक्स फॉर आर्ग्यूइंग. And I got some new insights from the book. I have summarized it in Booklet app. You can take a look. So let's get started with thanks for the feedback, the science and art of receiving and giving feedback well. So we have to deal with criticism. Yeah, taking criticism or criticizing others. Now, the most uncomfortable part of a boss or leader, he has to give negative feedback. गलतियां दिखती है एम्प्लॉयज को तो बताना तो जरूरी है, राइट? नहीं तो वो सुधरेंगे कैसे? बट देयर इज अ राइट वे ऑफ गिविंग फीडबैक्स. यहाँ भी वो चिल्लम चिल्ली करके सबके सामने इंसल्ट करना, वो तो जमाना गया. वो कर रहे हो तो आप तो गए, फिर इट विल नॉट गोइंग टू हेल्प. दैट्स इंडस्ट्रियल एज. टुडे इट इज नॉलेज वर्कर्स एज, वेयर जस्ट गिविंग द इंस्ट्रक्शंस एंड वो काम करेगा, ऐसा होता नहीं है. बिकॉज दैट बिलोंग टू द इंडस्ट्रियल एज, जहाँ पे
मशीन ऑपरेटर को बस बताना है कि ये बॉटल को इससे अंदर डालना है, उसमें हवा भरना है, पानी भरना है, वहां से बॉटल बाहर। तो वो मैकेनिकल काम देयर वाज अ क्लियर फ्रेमवर्क, देयर वाज अ क्लियर बाउंड्री, राइट। तो उसमें गलती हो गई तो वो डांटते थे। आज क्या है, टुडे वी आर इन नॉलेज वर्कर्स एज, जहां पे क्या करना है हम बताते हैं सबऑर्डिनेट्स को, टीम को कैसे करना है, दे हैव टू फिगर आउट। देयर आर नो क्लियर बाउंड्रीज, ब्लैक एंड व्हाइट व्हाइट ऐसा नहीं है कि देखो ये टॉपिक है, ये हमको प्रेजेंटेशन देना है, इसमें पीपीटी बनाओ। भी कैसे बनाना है, कहाँ से इंफॉर्मेशन लेना है, चैट जीपीटी यूज करना है नहीं करना है, इट्स अप टू हिम। सो दिस इज नॉलेज वर्कर्स एज। तो इसमें गलतियां होने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज व्हाट्स इन योर माइंड is not necessarily in your employee's mind. This is called as curse of knowledge. You know what is curse of knowledge? Suppose I am talking to Shantanu. Huh? Now, मुझे शंतनु को कुछ बोलना है, टिपिकली ऐसा रोकता है, शंतनु कल तू फ्री है क्या? ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों, कल तू फ्री है क्या? जब कोई मुझे ऐसा पूछता है तो इट ऑल डिपेंड्स, राइट। ये क्या सवाल हुआ, कल तू फ्री है क्या? इट कंप्लीटली डिपेंड्स। शंतनु के दिमाग में आएगा कि अच्छा देख, इफ यू आर इन बिग ट्रबल, यस आई एम फ्री फॉर यू। अगर किसी का तुम्हारा कोई डैड को कुछ हुआ है, आई एम देयर फॉर यू। पर अगर तू बोलेगा कि चल पिक्चर देखने जाए, तो शायद नहीं, आई हैव सम अदर प्रायोरिटीज, राइट। सो अभी क्या हो गया, ही हैज नो आइडिया व्हाट इज गोइंग टू कम नेक्स्ट। सो आर यू फ्री टुमारो इज ए यूजलेस क्वेश्चन, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि मेरे मन में जो है वो शांतनु को पता है। अभी अगर मैं बोलूंगा कि कल 3:15 बजे मेरा एक ऑनलाइन टॉक है जो मैं इस बुक के बारे में, तो तुम आ सकते हो क्या 3:15 से 4:15? नाउ वैसे आर यू फ्री टुमारो एट 3:15? नाउ दैट मेक सेंस। सो ऑलवेज स्टार्ट विथ व्हाई आर यू फ्री, पहले बताओ, व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन वो बताओ, एंड देन आस्क द क्वेश्चन आर यू फ्री टुमारो। हम उल्टा करते हैं, बिकॉज हमारे मन में वो फ्रेश रहता है ना, तो हमको लगता है सामने वाले को छोटी सी चीज, फॉर एग्जाम्पल उस दिन क्या हुआ, हाँ, सो माई फ्रेंड हैज अ fishtokri.com स्टार्टअप, एंड मंडे था, तो मंडे को मैंने उसको मैसेज किया कि सेंड मी ट्यूना फिश ½ kg, आई एम गोइंग टू मेक ट्यूना सलाड, एंड ही सिंपली रिप्लाइड टुडे नो फिश, and I find it very arrogant. This is on one hand you say I am a fish seller, online fish seller, like Licious, he is going to become the Licious of fish. I found it very arrogant. So he's my friend. So today I met him. He came to my house. I told that sentence gave me a lot of wrong impression about you. You should give a reason कि क्या, मुझे लगा कुछ स्ट्राइक हुआ है मछुआरों का, इसलिए फिश नहीं मिलेगा, या तू कुछ प्रॉब्लम में है, या यू सिंपली डोंट वांट टू सेंड फिश ऑन मंडे, और मंडे को तू बेचता ही नहीं, आई डोंट नो, सो एवरी मंडे विल बी द केस। हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस इन माय माइंड, राइट। एंड सो आई आस्क यू शुड गिव द रीजन, व्हाट रीजन यू गिव डजंट मैटर, छोटा हो बड़ा हो, रीजन देना जरूरी है। सिंपल सा एकदम छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सो आई यूज्ड टू ट्रैवल बाय ट्रेन फ्रॉम ठाणे टू नरीमन पॉइंट CST, when I used to work in stock market. और उस वक्त डब्बा लेके जाते ना, तो डब्बे का तेल ऐसा लीक हो सकता है, सो यू हैव टू कीप द बैग स्ट्रेट। तो कभी कभी बहुत भीड़ रहती है, तो जो विंडो के पास आदमी खड़ा है उसको हम बैग देते हैं ना कि भैया जरा ऊपर रख दो, क्योंकि आप पहुंच नहीं सकते। सो मैंने आई सेड दैट टू द पर्सन कि वो बैग सीधा रखो, वो एकदम खुन्नस समझता कि अपने आप को, एक तो मैं तेरा काम कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स ही डिड नॉट से इट एक्सप्रेसिवली, बट वो आंखों से पता चलता है कि ही फ्राउन। बट उसमें अगर मैं रीजन जोड़ दूं कि अंकल वो अंदर एक डब्बा है तेल का, तो शायद लीक होगा, इसलिए कैन यू प्लीज कीप इट स्ट्रेट और टिल्ट नहीं होना चाहिए, नाउ इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। कहीं पे भी जाओ, अगर आप जेरोक्स के लाइन में खड़े हो या, और आपको जल्दी जाना है, जस्ट डोंट बार्ज इन इंडो, सब लोग गाली देंगे अगर आप लाइन तोड़ोगे टिकट लाइन पे। पर अगर बोलोगे कि मेरे पिताजी वहां खड़े हैं, वो बहुत बूढ़े हैं और जल्दी उनको लेके जाना है, तो क्या मैं लाइन तोड़ के आगे जाऊं प्लीज? या एयरपोर्ट पे तो बहुत होता है वो, मालूम है ना, जब किसी को लेट होता है फ्लाइट के लिए, वो सिक्योरिटी सब गाली देते हैं। तो मैं तो, एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं लेट होता, मैंने अनाउंसमेंट किया, अभी हर एक को कैसे बोलूं, आई शाउटेड कि आई एम सॉरी आई एम लेट, आई स्टक इन ट्रैफिक, कैन यू प्लीज अलाउ मी टू गो अहेड इन द लाइन। सब ने मुझे अलाउ किया।
नॉट अ सिंगल फ्रॉम. ऑलवेज टेल व्हाई. हमको लगता है कि सामने वाला स्मार्ट है, नहीं. हम भी उसके जगह पे रहते हैं तो हमको भी समझ में नहीं आता कि उनके मन में क्या है. कोई भाग रहा है जल्दी जल्दी, वी डोंट अज्यूम कि उसकी फ्लाइट मिस हो रही है. I don't know why. We don't understand. This is called curse of knowledge. The knowledge which I have, I assume it's there in your head already. पर ऐसा नहीं होता. तो क्रिटिसिज्म की जब बात की मैंने, तो rarely I've seen people using humor to give criticism. It's not easy, yeah. You have to develop that sense of humor while giving criticism. तो for that you have to put a pause. जब भी कोई गलती करता है, स्पेशली आपके नीचे जो इंसान काम करता है, वहां पे अपना ईगो बहुत हाई रहता है. तुरंत बोलने का, अरे अकल नहीं तेरे को, ऐसा करना चाहिए काम, राइट. उस वक्त पॉज देना बहुत जरूरी है. ऑफ 1 hour, 1 day, 2 days, पॉज लो. द मोमेंट यू पुट गिव अ पॉज बिफोर यू गिव द रेस्पॉन्स, योर रेस्पॉन्स विल चेंज 100%. एक बहुत बढ़िया बुक पढ़ी थी मैंने, मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल. होलोकॉस्ट का जो अत्याचार हुआ था हिटलर के जमाने में, उसके जो प्रिजनर्स थे उसमें से एक था विक्टर फ्रैंकल. सबसे मानव जात पे सबसे बड़ा अत्याचार अगर कभी हुआ है तो वो होलोकॉस्ट जो प्रिजन में हुआ है, कैंप में, जो हिटलर ने किया था. और वो बच के निकला था. बहुत कम लोग वर द सर्वाइवर्स ऑफ दैट कैंप, एंड विक्टर फ्रैंकल वाज वन ऑफ देम. तो उसने बोला कि बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस. Between stimulus and response, there is a space. In that space, there is a pause button. In that pause button lies your freedom to choose your response. And in your response lies almost everything. Frown or smile, happiness or sadness, failure or success, everything. Progress or no progress, in your response lies everything. राइट. तो पॉज देना जरूरी. दैट आई हैव लर्नड. आई थिंक इन लास्ट 2 years आई हैव लर्न टू पुट अ पॉज. कभी क्विक रिएक्शन नहीं होता है मेरा. सो हाल ही में जो मैंने पॉज लेके क्रिटिसिज्म किया उसका एग्जांपल देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा. तो आई जस्ट टेल यू द स्ट्रक्चर ऑफ बुकलेट हाउस. एक रूम है जहाँ पे हम 4-5 लोग बैठते हैं और काम करते हैं, और हम खाना खाने थोड़ा दूर 2 रूम्स बाहर जाना पड़ता है. एक डाइनिंग रूम है, वहां पे हम खाना खाने जाते दोपहर को, और ये सब बंद करके जाते. ऑफिस का जो कमरा है वो बंद करके जाते. तो एक बार मैं, फरीद, पार्थ, पल्लवी, हम सब फ्रेंड्स है, खाना खा रहे थे. तो मैंने मजाक मजाक बोला कि अरे पार्थ, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई है क्या कि एक ऐसा बड़ा सा पंखा है, उसका डायमीटर मतलब ऐसा 1 किलोमीटर का पंखा, ताकि, और वो हम घर पे लगाएंगे, और उस सब मतलब 4-5 पंखे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही पंखा पूरे घर को हवा देगी, पूरे 5 कमरों को हवा देगी. तो वो सोचने लगा कि नहीं है, ऐसा तो कोई टेक्नोलॉजी है नहीं. अरे देखना, गूगल कर, ऐसा रहेगा. बोला कि नहीं, पता नहीं, पता कर, नहीं है ना. तो फिर ऑफिस का पंखा क्यों चालू रखा है. एंड धाड़ से वो उठ गया, ओ सॉरी सॉरी दादा, एंड ही वेंट एंड स्विच्ड ऑफ द फैन. नाउ सी, ऑल द पर्पसेस आर सॉल्व्ड. मुझे बुरा नहीं लगा क्रिटिसाइज करने में, क्योंकि मैंने एक जोक का इस्तेमाल किया. उसको बुरा नहीं लगा क्योंकि इट वाज अ जोक, एंड ही आल्सो गॉट द मैसेज. नेक्स्ट टाइम वो पंखा कभी चालू नहीं रहा. वो हमेशा बंद कर. सो दिस रेस्पॉन्स वुडंट हैव कम ऑन दिस नो इमीडिएटली. मैंने वो पंखा देखा, मैंने पहले खुद को शांत किया, थोड़ी देर खाना खाया, 15 मिनट के बाद मैंने बोला, उतना वो बिजली वेस्ट हो गई, उतना ही प्राइस जो है पे करना पड़ा. बट आई थिंक इट हेल्प्ड अ लॉट, राइट. सो ऑलवेज ट्राई टू बी क्रिएटिव एंड ह्यूमरस while giving a response, while giving criticism, especially negative feedback. Okay? पॉजिटिव फीडबैक तो सबको अच्छा लगता है, नेगेटिव फीडबैक में प्रॉब्लम है. अभी क्रिटिसिज्म की बात चल रही है, तो हाउ, अभी तो मैंने क्रिटिसिज्म कैसे देते हैं इसके बारे में बोला. हाउ अबाउट हाउ टू टेक क्रिटिसिज्म. इट्स नॉट इजी, आई नो. क्रिटिसिज्म हर्ट्स, बुरा लगता है, राइट. पर अभी 1-1.5 साल से मुझे बुरा नहीं लगता है, पहले लगता था. सो आई लर्न दिस, ये बुक में लिखा था. और सेम थिंग, एक गीता का बुक था, गीता फॉर चिल्ड्रन, छोटे बच्चों की किताब है, इंटरप्रिटेशन ऑफ गीता फॉर चिल्ड्रन. तो उसमें बोला था कि अगर किसी ने मेरा ऑडियो समरी पे कुछ कमेंट किया कि तेरी आवाज बहुत फालतू है, तेरा तो एकदम मराठी एक्सेंट है,
एकदम बकवास है तेरी आवाज, ऐसा लग रहा है कोई प्रवचन कर रहा है। तो इसने एक बार बोला था, बहुत पहले बोला था, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था। मुझे बोला, एक तो साले फ्री में कर रहा हूँ, ऊपर से ऐसा सुना रहा है तू। तो वो गलत है। आई टुक दैट क्रिटिसिज्म इन अ वेरी रॉन्ग वे until I read this, the difference between performance and performer। मैं वापस में शंतनु को यूज करता हूँ मेरे एग्जांपल में। तो अभी वो जो ऑडियो समरी है, इट इज माय परफॉर्मेंस एंड आई एम द परफॉर्मर। ही इज क्रिटिसाइजिंग द परफॉर्मेंस एंड नॉट द परफॉर्मर। दोनों को अलग करना है, डिटैचमेंट जो बोलते हैं ना, वो यही है। इफ आई डिटैच माई परफॉर्मेंस फ्रॉम द परफॉर्मर, और मैं सोचूंगा कि ये ऑडियो तो शंतनु ने बनाया, फिर मुझे बुरा लगेगा? बिल्कुल नहीं। अचानक से नो मेरा अप्रोच चेंज हो गया। दूसरों को कोई गाली दे तो हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको मिलता है तो अरे वाह ऐसे कैसे, राइट। सो परफॉर्मेंस और परफॉर्मर में फर्क जानो। देखो ना, जब भी कोई गिर जाता है ना ऐसे गलती से, तो हम हंसते हैं ना, तो हम इंसान पे नहीं हंसते, वो इवेंट पे हंसते। वो इवेंट में कोई भी रहेगा तो हम हंसेंगे, एक्सेप्ट हम खुद, राइट। तो पर गिरने वाले को क्या लगता है कि लोग मेरे पे हंस रहे हैं, गॉट इट। पर हमारा वो इंटेंशन है ही नहीं उस पे हंसने का, वो जो कुछ हुआ अचानक उस पे हंसी आई। मतलब क्या, द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम दिस एग्जाम्पल इज दैट वी जज अदर्स बाय देयर एक्शंस एंड वी जज आवरसेल्व्स बाय आवर इंटेंशंस। आई रिपीट, वी जज अदर्स बाय देयर एक्शंस एंड वी जज आवरसेल्व्स बाय आवर इंटेंशन। मतलब क्या कि अगर दूसरे ने कुछ मुझे गाली दी, कुछ गलत बोला, तो वो नलायक। पर अगर हमसे कुछ मुंह से निकले, अरे मुझे ऐसा बोलने का मतलब नहीं था, अरे मेरा वो इरादा नहीं था तेरा दिल तोड़ने का, ऐसे बोलते ना, वी ट्राई टू जस्टिफाई, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो। टिपिकल जस्टिफाइंग स्टेटमेंट्स। मैं मजाक कर रहा था, मेरा इंटेंशन नहीं था तुमको दुखाना। सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट आवर इंटेंशन व्हेन वी गो रॉन्ग, एंड यू ऑलवेज टॉक अबाउट एक्शन व्हेन समबडी एल्स गोज रॉन्ग, राइट। तुमने उस दिन कॉल बैक नहीं किया, यू आर केयरलेस। बट हमसे अगर कॉल बैक नहीं गया तो, अरे समझा करो यार, प्रॉब्लम था। राइट। सो वी जज अदर्स बाय देयर एक्शंस, वी जज आवरसेल्व्स बाय आवर इंटेंशन। सो परफॉर्मेंस और परफॉर्मर कि अगर आप उसको अलग कर दें, उसका जो कनेक्शन है अलग कर दे, तो थिंग्स विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। सेकेंड थिंग व्हाट आई लर्न अबाउट हाउ टू टेक क्रिटिसिज्म is see, people talking about you is the most important thing. Whether you are a mutual fund distributor, whether you are making summaries, or you are selling fish online, if people are not talking about you, that is dangerous. That means there is no growth. Now what they are talking doesn't matter. आपको उनको बोलना भी चाहिए, और आपको जो पसंद है वो भी बोले, दोनों कैसे होगा? The fact that people are talking in itself, you are on the right track. इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं कि जब कोई इंसान गलत बोलना शुरू करते ना आपके बारे में, ऐसे आप कोई भी महान इंसान लो और यूट्यूब पे डालो द डार्क साइड ऑफ, और महान इंसान का नाम डालो, आपको 10 वीडियोस मिलेंगे। द डार्क साइड ऑफ महात्मा गांधी, 100 वीडियोस मिलेंगे आपको, गंदी गंदी चीजें लिखी हुई है महात्मा गांधी की। तो मुझे भी लगता है एक दिन अगर द डार्क साइड ऑफ बुकलेट का ऐसा कोई वीडियो आएगा ना, आई डिक्लेयर, चलो आई हैव अचीव्ड द पिनाकल ऑफ माय सक्सेस। प्लीज ऐसे कोई बनाओ मत जानबूझ के, मैं मजाक कर रहा हूँ। पता चला कल यूट्यूब पे 10 वीडियोस आ गए ऐसे। सो डोंट यू थिंक पीपल आर टेकिंग आउट टाइम टू क्रिटिसाइज यू, इन इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट। अगर कोई लंबा चौड़ा मेल डाल रहा है आपको गाली वाला, डोंट यू थिंक इट इज वन ऑफ द विक्ट्रीज, बिकॉज लोगों को टाइम नहीं है। वो वोडाफोन को, कोका कोला को मेल जाता है क्या, जाता होगा क्या? तो अगर मुझे मेल्स आ रहे हैं, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट मीन्स people are finding difficult to ignore me. I am so good that they can't ignore me. Are you getting my point? There is a book, so good they can't ignore you. मैं फर्ज करो आप कमरे में बैठे हो, खाना खा रहे हो, और दरवाजे में से, दरवाजा खुला है आपका घर का, और एक आपकी काम वाली आती है, और आप 4-5 दोस्त या फैमिली डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं,
उसमें से एक मुड़ के देखेगा, बाकी तो लोग मुड़ के भी नहीं देखेंगे, अपना खाना चालू रखेंगे, है ना, बिकॉज शी कैन बी इग्नोर्ड. बट इमेजिन Sachin Tendulkar entering the room now instead of that calm wali bhai. You will find impossible to ignore. सब खड़े हो जाएंगे, अरे सचिन, खाना कितना भी स्वादिष्ट हो, because he is so good, you can't ignore him. यही लॉजिक यहाँ पे. If you are getting emails, comments on your post, lots of comments, even if it is negative, that means पहले तो congratulations, people are finding difficult to ignore you. You are so good at it. राइट. दूसरी बात, अभी सचिन का जिक्र ही लिया तो बोलता हूं कि जब सचिन 0 पे आउट होता है तो कैसे दिल से गाली आती है ना. अबे क्या तो इतना इतना ऐसा फुल टॉस था तो क्या 6 मारना जरूरी था क्या, राइट. क्यों? बिकॉज ही सचिन यार, हाउ कैन यू गो आउट ऑन 0, राइट. वो पार्थिव पटेल को गाली देने का भी टाइम नहीं है अपने पास, बिकॉज वी थिंक ही डजंट डिजर्व. नाउ यू गेट माय पॉइंट. जब लोग आपको ऐसा बोलते हैं तो उसके पीछे का उनका प्यार देखो. सिर्फ उनको बोलने का तरीका नहीं आता है, उसके पीछे का लव एंड अफेक्शन, फाइंड इट आउट. जैसे मुझे शुरू में बहुत लोग बोलते थे कि तू अमृत देशमुख, कौन से तू नाम का मराठी है ना, मराठी लोगों पे तू धब्बा है, तू इंग्लिश में कर रहा है सब कुछ, मराठी में नहीं कर रहा है. तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि अरे मैं इतना तो कर रहा हूँ ना, एटलीस्ट शुरुआत है, आगे जाके देखेंगे धीरे धीरे, सब फ्री में हो रहा है, कुछ लिमिटेशंस है, ऐसा मैं बोलता था. पर आज मुझे लगता कि नहीं, अरे उसके पीछे वो प्यार है. अगर मैं बुकलेट मिशन मेक इंडिया रीड शुरू ही नहीं करता तो क्या ये कमेंट आता? नहीं आता कि तू मराठी में शुरू कर. सेम वही ना सचिन का हुआ. सचिन ने इतने सारे सेंचुरीज मारे हैं, इसलिए हमको गुस्सा आता है जब वो 0 पे आउट होता है. अगर वो हर मैच पे 0 पे आउट होगा तो हम भूल ही जाएंगे ना उसको, लाइक अदर प्लेयर्स. तो वैसे तो कोई आपको बोलता है कि अरे तू ऐसा क्यों कर रहा है पागल, ऐसा कर, because they assume that we have an upper hand over them, we are the leaders and they are the followers. फॉलोअर का काम है बताना, हमारे काम की गलतियां निकालना, राइट. तब से नो, my whole mood has changed. सिर्फ people talking about me is important. The day people stop talking about me, something is going wrong. I'll go back and check क्या गड़बड़ है. All right. सो ये जो फीडबैक लेने का जो सिस्टम है, इसमें थोड़ा गड़बड़ है. इफ यू फील द नीड टू टेक फीडबैक, दैट इटसेल्फ शोज देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर सर्विस. फॉर एग्जाम्पल, हम जब खाना खाते हैं ना, और फरीद की अम्मी एक बढ़िया, उन लोग मुस्लिम कम्युनिटी का अलग ही मसाला रहता है, सबको पसंद रहता है. और कभी कुछ चिकन बिरयानी क्या 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 घर पे आता. अभी तो ये बकरीद आ रही है तो वी आर ऑल आर वेटिंग. और जब हम खाते हैं ना, जो मुंह से अरे क्या खाना बना है यार, मतलब he doesn't even ask, he doesn't feel the need to ask कि कैसा खाना बना है. तो वो दिल से जब निकलता है ना, दैट इज अ रियल फीडबैक. तो जब मैं खाना बनाता हूँ, आई एम अ वेरी बैड कुक, तो मुझे पूछना पड़ता है, अरे वो छोले की सब्जी कैसी हुई? हाँ हाँ अच्छी हुई. तो समझ लो, सो नो फीडबैक इज बैड फीडबैक. अगर वो वाकई में अच्छी, तो वो खुद ही बोलते हैं ना चिल्ला चिल्ला के, अरे मैं तो उंगलियां चाट ली, तुम्हारे हाथों में जादू है, ऐसे हम बोलते हैं ना. तो ये होना चाहिए, राइट. गिव देम अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू टॉक voluntarily. How many of you have talked about booklet guy to your friend, to your father, to your son, to any of your colleagues? Almost everybody, right? Why? Because I have given you a very strong reason to talk about me. I have not told you to talk about me. ये टिपिकली गलती क्या करते हैं, अब मेरे बारे में बताओ ना, मुझे और क्लाइंट लाके दो ना, रेफरल्स, ठीक है, बट दैट इज नॉट द बेस्ट वे. गिव देम अ स्ट्रॉन्ग रीजन. व्हाट्सएप, क्या व्हाट्सएप वालों ने आपको आके बताया व्हाट्सएप डाउनलोड करो? क्या उन्होंने विज्ञापन डाली थी न्यूज़पेपर में, ऐड इस पे, टीवी पे? नहीं. अभी अभी ऐड आने लगे, वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन. पहले मैं बोला 10 साल पहले कभी ऐड नहीं. कभी रिक्शा के पीछे व्हाट्सएप का स्टिकर था, डाउनलोड बुक व्हाट्सएप ऐप, नहीं. तो कैसे हुआ? आपके दोस्त ने बताया. मुझे याद है मैंने कैसे व्हाट्सएप डाउनलोड किया था. किसी ने कुछ मोबाइल में पढ़ के मुझे जोक सुनाया, संता बंता का जोक. तो मैंने पूछा तू कहाँ से पढ़ा ये जोक? अरे एक ऐसा ऐप है, वो किसी ने मुझे भेजा. तो मैंने बोला कि अच्छा ईमेल? नहीं ये ईमेल नहीं, ये अलग है.
ये तुरंत, मतलब हम बातें कर सकते हैं रियल टाइम। वो क्या बात कर रहा है, हाँ हाँ हाँ, मैंने डाउनलोड किया। दैट जोक वाज अ रीजन टू डाउनलोड व्हाट्सएप। WhatsApp gave me a strong reason to talk about WhatsApp. He talked about WhatsApp because of that joke or any message. You get my point? So people talking about you voluntarily. आप कितना बोलोगे? You will exhaust. You get exhausted. कितना आप खुद मार्केटिंग करोगे, right? All right. इनिशियल स्टार्टअप फेज में ना मेरा कम्युनिकेशन में गड़बड़ होता था, सो आई यूज्ड टू अटेंड ऑल द स्टार्टअप इवेंट्स। नया नया था ना, तो जस्ट बुकलेट स्टार्ट हुआ था, व्हाट्सएप ऐप भी नहीं था, व्हाट्सएप पे शुरू किया था। तो बड़े बड़े लोग, कुणाल शाह, फ्री चार्ज का वाला जो था, अभी क्रेड उसका फाउंडर है, फिर ओला का फाउंडर, बड़े बड़े लोग आके स्पीच देते थे, टॉक्स देते थे, और मैं ऑडियंस में बैठ के उनको सुनता था। अभी तो खैर उल्टा हो गया, मैं जाता हूँ बात करने का और वो मेरे साथ को स्पीकर रहते। तो मुझे तो ग्रो होना था, मुझे मिशन मेक इंडिया स्प्रेड करना था। तो उनके स्पीच के बाद, टॉक के बाद, मैं उनको मिलने जाता था स्टेज पे और बोलता था कि ऐसा ऐसा मैंने शुरू किया है व्हाट्सएप पे, तो आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर गाइडेंस, कैन यू प्लीज हेल्प मी, प्लीज टेक माई नंबर। हाँ, ऐसा वो नंबर लेते थे। और फिर बाद में कुछ नहीं, उनसे कुछ कॉल नहीं आता था। तो मेरे को बहुत बुरा लगता था, मैं मायूस होता था। फिर मैंने कुछ सोचा कि नहीं, मेरे से कुछ गलती हो रही है। फिर आई चेंज माई कम्युनिकेशन। मैंने ये बोलना शुरू किया, ये बड़े बड़े लोग थे जो स्टार्टअप्स में सक्सेसफुल हुए थे, और बोला कि आई वॉन्ट टू हेल्प यू इन योर स्टार्टअप। मेरे पास 5,000 लोग हैं, मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स है, उसमें से आई वॉन्ट टू यूज दैट फॉर यू बिकॉज आई रियली लाइक योर स्पीच, आई लाइक योर थॉट्स, योर आइडियाज। दूसरे दिन कॉल आने लगा। सी, फर्स्ट बी अ गिवर एंड genuinely just don't create a trap for him to come to the house or to call him. Genuinely help them. This is the best way. गिवर्स गेन, ऐसे ऐसे किताब है। आपने BNI का सुना है? BN बिजनेस नेटवर्क, ऐसा कुछ बिजनेस नेटवर्क होता है वो, उनका वो उन्होंने वो फाउंडर ने बुक लिखा है, गिवर्स गेन। आपका कोई दोस्त अगर BNI में रहेगा ना, तो उनसे वो बुक मांग के पढ़ लो। छोटी सी 50 पेजेस की बुक है। विल कम टू नो द पावर ऑफ गिविंग, बट बाय नेचर वी आर टेकर्स। हाँ, तो सीखना पड़ता है, गिविंग सीखना पड़ता है, वो नेचुरली नहीं आता है। हर कोई बाबा आमटे, मदर टेरेसा नेचुरल नहीं होते, वो प्रैक्टिस करना पड़ता है। या एक बार, सो आई हैव रिटन माय बुक ना, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव रीडर्स। नॉट अ सिंगल नेगेटिव फीडबैक अब तक, सिर्फ एक ही ईमेल आया था, लंबा चौड़ा मेल एक लड़के ने लिखा था। मैं बोलता हूँ कि टाइप्स ऑफ फीडबैक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ आमिर, कौन से फीडबैक सीरियसली लेने चाहिए और कौन से इग्नोर करने चाहिए। तो पहले मैं एग्जांपल देता हूँ ऐसा वाला फीडबैक जिसको मैंने सीरियसली नहीं लिया। तो उसने लंबा चौड़ा कि ये क्या है, ये प्रोफेशनल नहीं लग रहा है बुक तेरा, तेरा कार्डबोर्ड भी गंदा है, वो ऐसा लग रहा है जेरोक्स वाले तेरे पेपर्स है, ऐसा बुक लगता ही नहीं, वो नोट्स लगते हैं क्लासेस के, एकदम वाहियात है। मैं तो देख के तो मैं एक से ऊपर एक ऐसे बॉम्ब गिर रहे हैं, मैं ऐसा 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 मायूस होते जा रहा हूँ एक एक लाइन पढ़ के। माई कॉन्फिडेंस वॉज, आई वॉज लूजिंग माई कॉन्फिडेंस। वन लास्ट लाइन एंड आई डिसाइडेड गो टू हेल दिस विद दिस फीडबैक। यू नो द वो लास्ट लाइन वो नहीं लिखती तो रात को मुझे नींद नहीं आती। उसने क्या लिखा पता है? आई एम येट टू रीड द बुक। मैंने तो बुक नहीं पढ़ी। और फिर अरे धत तेरी, उसने बुक नहीं पढ़ी अभी तक। मतलब क्या, शी इज जस्ट वेंटिंग आउट हर ओन फ्रस्ट्रेशन। 90% ऑफ द टाइम लोग जो गलत भाषा का इस्तेमाल करके जो देते हैं ना, ट्रोलिंग वगैरह, इट इट शोज देयर ओन फ्रस्ट्रेशन, इट शोज देयर ओन कैरेक्टर देन योर्स। फॉर एग्जाम्पल, जब लॉकडाउन धीरे 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 खुलने लगा, ठीक है, बहुत दिन के बाद मैं नीचे, मेरे को बाइक चलाने की बहुत इच्छा थी, बहुत। 1 साल हो गया तो मैंने मोटरसाइकिल नहीं चलाई थी। तो मैं नीचे उतरा, गेट के उतर, और मेरा दोस्त आया। हम भी बहुत दिनों से मिले थे, वो 4 बिल्डिंग दूर रहता था, तो मिले नहीं थे हम। और लॉकडाउन में मैंने मेरे सेहत पे बहुत काम किया, बहुत अकेले पागल की तरह कसरत किया, हेल्दी ईटिंग की, और काफी वेट लूज किया मैंने, शेप में आया मैं। तो वो दोस्त आया, अरे अमरुद क्या हुआ तुझे, बीमार था क्या, इतना वेट लूज किया?
शिट, देख तेरे पहले कैसे था, अभी क्या हो गया तू? मैं बोला क्या हो गया, वेट लूज हुआ तो अच्छी बात है ना, पहले मैं मोटा था। नहीं नहीं, एकदम गंदा लिख रहा है तू। बोला ठीक है। वही उसी उसी दिन उसी वक्त बाइक लेके मैं थोड़ा नुक्कड़ तक गया, मुझे दूसरा दोस्त मिला और बोला अरे अमृत तो क्या दिख रहा है, तेरे एकदम ब्राइट हो गया चेहरा, क्या फैट्स भी तेरे कम हो गए थे, डबल चिन था पहले वो भी चला गया, गाल तेरे अंदर गए, क्या किया क्या तूने ऐसा? सी, इंसान वही है, दोनों का नजरिया देखो। पहला वाला, फिर मैंने देखा कि पहला वाला खुद फ्रस्ट्रेटेड था, उसे लॉकडाउन में पूरा कुरकुरे और बासुंदी और गुलाब जाम खाए होंगे, इसलिए वो उसका गुस्सा मेरे पे निकाल रहा है। ओके, और दूसरा वाला ही वॉज एक्चुअली वर्किंग ऑन हिज बॉडी थ्रू आउट द लॉकडाउन, सो ही सॉ गुड थिंग्स इन मी। तो ये गड़बड़ होता है फीडबैक्स का। तो बहुत बार यू डोंट टेक इट ऑन द फेस वैल्यू, बुरा नहीं मानना चाहिए। उसकी जिंदगी में झांक के देखो कि क्या गड़बड़ है। वो बीवी के साथ झगड़ा करके आया होगा, तो चलो माफ कर दो उसको, मन ही मन माफ कर दो उसको, कि ठीक है, समझ समझ सकते हैं हम वो। एक और एग्जाम्पल, सो सी हाउ नो व्हेन यू गेट जज्ड, पीपल जज यू, इट रिवील्स मोर अबाउट देम देन यू योरसेल्फ। लेट पीपल जज यू, नो प्रॉब्लम। एक बार जब मैं स्टॉक मार्केट में काम करता था, नौकरी करता था, तो आई वॉज यंग ब्लड, जोश था, नया नया करियर। तो मैं रात को 9-9 बजे तक ऑफिस में बैठता था। आई वॉज क्रेजी अबाउट स्टॉक मार्केट, स्टडी एनालिसिस। मैंने सिर्फ स्टॉक मार्केट पे 300 बुक्स पढ़े थे, ओनली इन स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, पीटर लिंच, जॉर्ज सोरोस, चार्ली मंगर, वॉरेन बफे, सब सब पढ़ा था मैंने। और मैं ऐसा देर रात तक बुक्स पढ़ता था, एनालिसिस करता था। तो रात के 9 बजे थे, कोई नहीं था ऑफिस में, मैं अकेला था, और लैंडलाइन बजा। मेरा दोस्त जो मेरे बगल के क्यूबिकल में बैठता था, उसका फोन था, शायद कुछ चाबी वाबी भूल गया था वो, तो उसके लिए फोन किया उसने, कि जस्ट चेक करने के लिए वो चाबी है कि नहीं। तो मैंने उठाया, ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई ऑफिस बॉय उठाएगा फोन, तो मैंने उठाया। अरे अमृत, 9 बजे तू ऑफिस में क्या कर रहा है, कौन देख रहा है क्या? मैं बोला कौन, ऑफिस में कौन देखता है फोन? मुझे बड़ा गुस्सा आया, आई फेल्ट जज्ड। उस वक्त मैंने गुस्सा किया। पर अब भी 7 साल के बाद जब मैं ये पढ़ता हूँ, मैंने फीडबैक जजमेंट के बारे में, कि ये ख्याल उसके मन में आया कैसे, ऑफिस में कौन, क्योंकि वो खुद, हाँ आप समझ गए। वो खुद शायद दिखता होगा, तो वो हम दूसरों को अपने नजरियों से ही देखते हैं। अगर हमने काला चश्मा देखा बनाया है, तो दुनिया काली ही दिखेगी। आज मुझे वो जाके समझ में आया कि उसने ऐसा क्यों बोला था। ऑलराइट। सो नो फीडबैक इज बैड फीडबैक, ये अपना आज का मेजर टेक अवे है। तो ऐसा काम करो कि सामने वाला वाह वाह बोले। जब शायर को बोलना पड़े ना कि भाई ताली बजाओ, समझ जाने का वो फ्लॉप शायर है। नहीं तो ऐसी ताली बजती है कि स्टैंडिंग ओवेशन बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, राइट? अपने आप स्टैंडिंग ओवेशन होता है। होता क्या है ना, जब फीडबैक देते हैं लोग, वी आर वेरी बैड गिवर्स ऑफ फीडबैक, बिकॉज we are very bad in understanding our own problems, own choices. For example, see what we feel and what we think and what we say and what we do, सब अलग अलग होता है मोस्टली। What we say is one thing, what we feel is one thing, what we think is other, what we say is third, and what we do is fourth. Feeling, thinking, saying, doing, इतनी सारी चीजें हैं, right? We are very bad at expressing our feelings. तो एक बार गांधी जी को इंग्लैंड में बुलाया था, हाउस ऑफ कॉमन्स करके। तभी ब्रिटिश राज था आप में, पर कुछ ऑफिसर्स दे यूज्ड टू एडमायर एंड रिस्पेक्ट महात्मा गांधी अ लॉट। तो द ऑडियंस वाज वेरी हॉस्टाइल, क्योंकि ब्रिटिश वाज नो ब्रिटिश राज चल रहा था ना। पर गांधी जी को वहां पे बुलाया था, कुछ 500 लोग थे उस ऑडिटोरियम, बड़ा सा आलीशान ऑडिटोरियम था। एंड यू नो व्हाट, देयर वर नो नोट्स, कुछ प्रॉम्प्ट नहीं। गांधी जी 2 घंटे, गांधी जी ने सबको उनका ध्यान पकड़ के रखा। आफ्टर 2 hours द होल क्राउड स्टूड अप एंड गेव अ स्टैंडिंग ओवेशन। और उसके बाद मिस्टर देसाई वाज द सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी। तो रिपोर्टर्स जाके देसाई को बोले कि ये इंसान ने कैसे, नोट्स नहीं कुछ नहीं, 2 घंटा हमको हमारा ध्यान भटका भी नहीं और स्टैंडिंग ओवेशन मिला।
ऐसे कैसे? दैट टाइम ही सेड दैट व्हाट गांधी फील्स, थिंक्स, सेज एंड डज, दे ऑल आर सेम, हेंस ही डजंट नीड एनी नोट्स। तब जाके आप महात्मा बन गए तो समझो। पर ऐसा होता नहीं, हम जो बोलते और करते हैं उसे बहुत गैप रहता है, तो उस गैप को कम करना है जितना हो सके, राइट? तो अभी मुझे गैप का जिक्र हुआ तो मैं बोलता हूँ कि एक गैप कैसे मेरे में मुझे दिखा। जो कभी मुझे कोई पूछता था कि तेरा फेवरेट कलर क्या है, तो मैं बोलता था व्हाइट। हाँ। और फिर एक कोई दोस्त आया था 26 जुलाई में, जब बाढ़ आई थी ना मुंबई में, तो बहुत सारे दोस्तों को मैंने पनाह दी थी मेरे घर पे, क्योंकि मेरा घर स्टेशन के पास है और ट्रेन सब ठप हो गए थे। तो मैं वार्डरोब खोला, किसी को कपड़े चाहिए थे, तो मेरा दोस्त ने देखा, अरे तू हमेशा बोलता है व्हाइट कलर तेरा फेवरेट है, पर तेरे तो सब ऑलिव ग्रीन कलर के शर्ट है। बोला हाँ रे, पॉइंट तो बराबर है। फिर मैंने सोचा मैं व्हाइट व्हाइट क्यों बोल रहा हूँ। सी हाउ वी डोंट नो व्हाट वी डू एंड व्हाट वी से, इसमें कैसा गैप रहता है। फिर मुझे पता चला कि माय पर्सनालिटी इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय माय फादर, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी लाइक माय फादर, ही इज अ वेरी सक्सेसफुल मैन। और उनका सब व्हाइट व्हाइट, तो पूरा घर को व्हाइट कलर, अभी देखो मैंने घर को व्हाइट कलर ही दिया है, और उनकी गाड़ी भी व्हाइट, घर का बाहर कलर भी व्हाइट, शर्ट व्हाइट, पूरा व्हाइट पहनते थे वो। तो मैंने भी इनवेरिएबली सोचा कि मैं भी व्हाइट, मैं मेरा फेवरेट कलर व्हाइट। बट एक्चुअली अभी देखो, हाँ, किसी सर्वे फॉर्म्स का प्रॉब्लम देखो। अगर मैं मॉल में एंटर कर रहा हूँ और कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरर है जो सर्वे ले रहा है फीडबैक फॉर्म से, और उसमें लिखा होगा कि विच इज योर फेवरेट कलर, मैं लिखता व्हाइट। और जब वो मेरे फीडबैक के बेसिस पे वो मैन्युफैक्चर करते व्हाइट कलर के शर्ट ज्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे, और मैं जब शॉप पे जाऊंगा तो एक्चुअली मैं व्हाइट लूंगा ही नहीं, मैं ऑलिव ग्रीन कलर लूंगा। तो पूरा सर्वे फॉर्म ये इज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। सो डोंट, आस्किंग पीपल फॉर फीडबैक इज नॉट इनफ, इनफैक्ट इज डेंजरस। हेनरी फोर्ड ने बोला था, जब पहली बार उसने कार का आविष्कार किया, उसने बोला था कि हैड आई आस्क्ड पीपल व्हाट डू यू वांट नेक्स्ट फॉर ट्रांसपोर्ट, वो बोलते वी वांट फास्ट हॉर्स कार्ट्स, फास्ट रनिंग हॉर्स कार्ट्स, क्योंकि कार ये चीज ही पता नहीं है, तो मतलब ही नहीं है ना पूछना। ऑटोमोबाइल कार लोगों को पता ही नहीं है, तो वो तो मार्जिनली सोचेंगे ना कि भाई और तेज दौड़ने वाले घोड़ा गाड़ी चाहिए हमको, राइट? सो यू नेवर टुक एनी फीडबैक, राइट? सो दैट डजंट मीन दैट यू शुड नॉट आस्क पीपल, ओके? मैं बस एक डेंजर्स बता रहा हूँ कि कैसे देयर कैन बी अ गैप बिटवीन व्हाट पीपल से एंड व्हाट पीपल डू। Yeah, we mostly take decisions emotionally and then try to justify them logically. I repeat, most of the time we take decisions emotionally and then we try to justify them logically. For example, आप देखो जब मॉल में आप शॉपिंग करते हो, जो डी मार्ट वगैरह जो रहता है ना, सुपर मार्केट, तो जब कैश काउंटर के पास कुछ चीजें रखे रहती है, टॉफी, चॉकलेट, कुछ शेविंग का कुछ या ऐसा कुछ जो हमको लगता है रोज, और हम उसमें से कुछ उठा लेते हैं, या वो एक्चुअली उनके टैक्टिक को हम विक्टिम हो जाते हैं, वी बिकम द विक्टिम ऑफ देयर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। now but we don't say this that we I fell prey to their marketing strategy. We say नहीं नहीं मुझे वो चाहिए था, वो ना वो कलर की ड्रेस मेरे पास थी नहीं, पहले मेरे को लेनी थी और वो कोइंसिडेंटली मुझे दिख गई इसलिए मैंने ले ली। अगर चाहिए था तो it would have been the part of your shopping list. So we try to justify. We don't like to admit, yeah, I got emotional. I took it spontaneously. It was an impulsive shopping. कभी नहीं बोलेंगे हम, because that shows our emotional part. But we like to be looked as logical creatures. हम इंसान है ना, intelligent लगने चाहिए, right? But we all are emotional creatures. और इसलिए देखो, मिशन मेक एंड रीड बुकलेट, आई नेवर ट्राई टू अटैक पीपल्स ब्रेन, आई ट्राई टू अपील टू देयर हार्ट। और उसमें मैंने ऐसा एक सोशल लिया कि लेट्स मेक इंडिया रीड, और बुकलेट ऐप के बारे में कम बोलने लगा, started talking about reading habit and got people emotionally involved in this mission. So अगर देखो सलमान खान ने कितना भी बोला, सलमान खान आपके घर पे आया और मेरी पिक्चर कैसी लगी, तो आप बोले हाँ सलमान भाई क्या पिक्चर थी, मस्त थी। तो ऐसा पूछ के तो होता नहीं है ना, आप अच्छे ही बोलोगे। आप कस्टमर पूछे कि कैसा लगा आपका हमारी सर्विस, हाँ हाँ हाँ, अच्छा था। वो जब सलमान खान बाहर जाएगा तब असली डिस्कशन होगा, अरे क्या वाहियात सिनेमा थी वो, फालतू।
ये तो फालतू पिक्चर बनाता है वो, ऐसा बोलते हैं हम, राइट? द बेस्ट एग्जाम्पल इज ये पठान का जो है. इफ यू सी, not a single person in my friend circle strongly recommended me to watch Pathan, and yet everybody claims Pathan is a super hit. ऐसे कैसे हो सकता है? It was a artificially made hit movie, क्योंकि सब पूरी बॉलीवुड की लग गई थी, एंड शाहरुख खान बीइंग द सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर बॉलीवुड इंडस्ट्री, उन्होंने पूरा मार्केट ही खरीद लिया था, पूरे सिनेमा हॉल्स खरीद लिए थे, और वो रिव्यूज वगैरह सब मैन्युफैक्चर्ड थे. भाई वो एक हद तक हो सकता है, बिकॉज नन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव गॉन एंड वॉच पठान. इतना तो कोइंसिडेंस हो नहीं सकता, राइट? सो ये है कि इट वाज अ मैन्युफैक्चर्ड वे. फीडबैक कैसे रहना कि दिल से हम, अरे वो 3 इडियट पिक्चर देख यार, क्या पिक्चर है, तो कुछ जाके देखना ही चाहिए, एज इफ आई हैव मेड दैट मूवी, ऐसे हम वो बात करते, राइट? दैट इज रियल वर्ड ऑफ माउथ. तो इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ फीडबैक इज दैट इट नीड नॉट नेसेसरली कम टू यू. जैसे इस वक्त हिंदुस्तान में कम से कम 1000 लोग बुकलेट गाय के बारे में बात करते होंगे, और अभी रात तक एक 500 डाउनलोड्स हो जाएंगे बुकलेट ऐप के. पर मुझे नहीं पता है कि कौन बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, पर कोई ना कोई बात कर रहा है. द फैक्ट दैट आज रात तक 500 डाउनलोड होने वाले, एवरीडे हो रहे हैं. तो कहां से हो रहे हैं? मैं तो कुछ एड्स नहीं डाला हूं, मैं किसी को बता नहीं रहा हूं. मैं भी सुबह एक इंसान को मैंने अगर बोला कि ऐसे समय काम करता तो 1 डाउनलोड आना चाहिए ना, तो बाकी के 499 कहां से आए? बिकॉज ऑफ फीडबैक्स. दोस फीडबैक्स आर नॉट कमिंग टू मी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yeah. So give them a very strong reason. Your customers should get a very strong reason to talk about you. And that reason need not be about your product and service. It could be anything else. For example, एक विलेज पे, एक गांव में एक डॉक्टर था. वो एमबीबीएस था, एमडी नहीं था. और बाकी के डॉक्टर्स एमडी थे, पर पूरा मोहल्ला वो एमबीबीएस के डॉक्टर के पास ही जाता था. वो इतना कुछ बड़ा डॉक्टर नहीं था. तो सबको ताज्जुब हुआ कि सब लोग इसके क्लिनिक में भीड़ होती है, और बाकी इतने अच्छे अच्छे ज्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर है उनके पास भीड़ नहीं होती. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया एक पेशेंट ने कि वो डॉक्टर खुद जब अंदर जाता है तो सबको नमस्ते करता है, कोई बुजुर्ग रहेगा तो उनका पैर पैर छूता है, कि भगवान ने मुझे आपकी सेवा करने के लिए डॉक्टर बनाया है, तो आपको मुझे सैल्यूट नहीं करना है, मुझे आपको सैल्यूट करना है. अभी इसका उसके डॉक्टर के काबिलियत से कुछ लेना देना नहीं है. इट इज अज्यूम कि डॉक्टर है तो वो अच्छी गोली देगा और हम ठीक हो जाएंगे. तो पीपल वेंट टू हिम फॉर दीज थिंग्स, फॉर हिज वार्मथ, फॉर हिज ह्यूमिलिटी, एंड एज अ साइड डिश ट्रीटमेंट. तो ट्रीटमेंट तो अच्छी होनी चाहिए ऑफकोर्स. अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो मैं वापस डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा ना, राइट? मैं डॉक्टर चेंज करूंगा. सो जरूरी नहीं कि आपको जो दे रहे हो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उसी में आपको बेस्ट होना है, नहीं, और बाकी की चीजें हैं उसमें बेहतर बनो. तो जो पेशेंट था ना, एक पेशेंट, तो मैं तो एक ग्रोसरी शॉप ओनर हूं, मैं क्या कर सकता हूँ ऐसे ताकि लोग कोई और रीजन की वजह से मेरे पास आए, ना कि सिर्फ टूथपेस्ट और साबुन खरीदने को. तो उसने क्या आइडिया किया बताए, डॉक्टर से इंस्पिरेशन लेके उसने डिसाइड किया जो भी कस्टमर मेरे दुकान में आएगा मैं इसको ब्रांड न्यू नोट्स दूंगा. जो हम चेंज देते हैं ना, अगर 50 रुपए की चीज है और सामने कस्टमर ने 100 रुपए दे तो हमको 50 वापस करना है. तो ही डिसाइडेड कि सामने वाला फटा हुआ नोट दे, पुराना दे, डजेंट मैटर, मैं लूंगा. जैसे टिपिकली शॉपकीपर्स क्या बोलते हैं, ओ साहब ये दूसरा नोट दो ना, ये क्या है, फटा हुआ है. उसने उसमें मौका ढूंढा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट और टाइम में बैंक में जाके ब्रांड न्यू नोट्स लाना है बस. और regardless of the other person giving old notes or new notes or fata hua note, he started giving all brand new notes. 10 rupees, 50 rupees, 100 rupees, 500 rupees. People started going to him more for some third reason. Because if you are going to sell the same soap that the other person is selling in your neighborhood, what are you giving me a special reason to come to you? वो reason कुछ भी हो सकता है. You did not be better in your product and service only. You can be better in something else. समझा? और फिर लोग ज्यादा क्यों आने लगे? Because they started giving feedbacks to their neighbors, their friends. अरे वो इंसान ना कुछ अलग है यार, बहुत अच्छा इंसान है, वो ना नए नोट्स देता है यार.
तेरे को नए नोट चाहिए क्या, तू उसके पास जाके कुछ खरीद। वेरी इंटरेस्टिंग राइट। सी, इफ यू सी द जनरल फीडबैक पीपल टॉक, हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि वो इंसान ना बहुत अच्छा बाप है, वो इंसान बहुत अच्छा भाई है, हम ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते वो इंसान अच्छा है। जो जो बाप के तौर पे अच्छा है वो शायद दोस्त के तौर पे भी अच्छा होगा, और वो शायद बॉस के तौर पे भी अच्छा होगा, और वो पति के तौर पे भी अच्छा होगा। तो इंसान जब अच्छा होता है वो सबके साथ अच्छा होता है या सबके साथ बुरा होता है, राइट। सो यू नेवर गिव दिस फीडबैक कि वो ना वो वो बहन बहन के तौर पे बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं होता है ना, वो इंसान अच्छी है। कभी ऐसा सुना है आपने कि स्पेसिफिक रोल के लिए हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा नहीं होता है, राइट। टीचर को, अरे वो टीचर ना बहुत अच्छी है, और सबके साथ अच्छे से रहते हैं, राइट। तो वो टीचर प्रॉब्ली इज अ वेरी गुड स्पाउस एट होम, a very good mother at home, a very good neighbor, and that's why she's a very good teacher. Okay. Uh, okay, I think I have covered. I have another 10 minutes today because Dharmendra is going to talk something. There is something called negative feedback loop from the hell. इसका ये फ्रेज यूज किया है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ डैश बाय मार्क मैनसन। उसका यहाँ पे भी जिक्र हुआ है, थैंक्स फॉर द फीडबैक, बट अलग तरीके से। नेगेटिव फीडबैक लूप फ्रॉम द हेल क्या होता है पता है? अभी हमने जिक्र की फीडबैक्स दूसरों को देना और फीडबैक्स लेना। व्हाट अबाउट आवर ओन फीडबैक? हम खुद को भी बहुत छोटे छोटे फीडबैक देते रहते मन ही मन। पता है कैसे? कभी कभी रात को मैं जब सो जाता हूँ बेड पे, लेट जाता हूँ, तो मुझे कभी कभी होता है ना, कभी नींद नहीं आती है। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, कभी कभी ऐसा साल में एक बार होता है मेरे साथ, फॉर वॉट एवर रीजन। मे बी उस दिन ज्यादा कॉफी पी ली होगी, या कुछ कुछ पेज ढीला हो गया, किसी का झगड़ा हो गया, तो नो वो चैटर बॉक्स चलता रहता है और नींद नहीं आती। तो आई यूज टू जस्ट लाई डाउन एंड जस्ट थिंक, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, नींद क्यों नहीं आ रही, नींद क्यों नहीं आ रही, एंड दिस थिंकिंग रीइंफोर्सेस, और वो नींद नहीं आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो वाई वी स्लीप करके बुक है, उसमें उन्होंने बोला कि अगर नींद नहीं आ रही है, थोड़ा इंतजार करो, 5-15 मिनट नींद नहीं आ रहे, जस्ट गेट अप एंड डू समथिंग, वॉच टीवी, रीड अ बुक, लिसन टू म्यूजिक। इसके बारे में मत सोचो कि मुझे नींद नहीं आ रही, सो नहीं तो वो लूप में अटक जाओगे आप। दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक लूप फ्रॉम द हेल। दैट आउटपुट, मुझे नींद नहीं आ रहा है, बिकम्स एन इनपुट अगेन, एंड इट एम्पलीफाइज। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि कोई हॉल में जब कोई लेक्चर चल रहा है और एक माइक लेके कोई इंसान बात कर रहा है, और वो बात करते करते अगर माइक स्पीकर के पास गया ना, तो डूम करके ऐसी गंदी सी आवाज आती है, एको होता है। पता है वो क्यों होता है? इट्स अ फीडबैक लूप। अभी ये माइक है, इट इज एन इनपुट डिवाइस, ठीक है, मेरी आवाज वो इनपुट की तरह से ले रहा है। सपोज मैं कहीं हॉल में बात कर रहा हूं और एक स्पीकर है, ठीक है, वो स्पीकर इज एन, दिस माइक इज कनेक्टेड टू दैट एम्पलीफायर कॉल्ड स्पीकर, और स्पीकर से मेरे आवाज 10 टाइम्स बड़ी होके वो हॉल में पहुंचेगी। पर अगर ये मैं स्पीकर के पास जाके बात करूंगा, तो वो जो आउटपुट है वो इनपुट लेके लिया जाएगा, मेरी आवाज भी, और वो मेरी स्पीकर के थ्रू आवाज आ रही है वो भी। सो दैट आउटपुट बिकम्स इनपुट, और गंदी सी आवाज से क्रिएट होती है। दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक लूप। आई जस्ट गिव यू एन एनालॉजी टू अंडरस्टैंड दिस। इसलिए बहुत बार जूम मीटिंग्स में देखो, ऐसा कभी एको की आवाज आती है ना, क्योंकि उसने एक इनपुट चालू रखा है, मतलब कभी कभी कनेक्टेड माइक्रोफोन और लैपटॉप का माइक्रोफोन दोनों चालू रहता है, और फिर उसी की आवाज एम्पलीफाई हो जाती है और सब मीटिंग का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। दैट इज लूप। वो हमारे जिंदगी में भी ऐसा बहुत होता है कि आई गेट फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज आई फॉट विथ माई बॉस, एंड द थॉट that I'm getting, I got frustrated makes you more frustrated. It's a feedback from the hell. और दूसरा लूप क्रिएट होता है, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड में, मियाँ बीवी में, कि नो दूसरे को फीडबैक देना बहुत आसान है। हम अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते कि मेरे से क्या गलती हो रही, पहले दूसरे को एडवाइस देना शुरू हो जाते हैं हम। जैसे पति बोलता है कि तुम कितना खर्चा करते हो शॉपिंग पे, अभी तो ड्रेस लिए, और तेरा तो 10,000 के नीचे होता ही नहीं है, ज़ारा के अलावा तो कुछ लेते ही नहीं है। हाँ, इतना एक एक ही शॉपिंग में तेरे 5-10 हजार खर्च होते हैं। फिर बीवी बोलेगी, अच्छा तो तुम रात को दोस्तों दोस्तों के साथ बैठते हो और 4,000 की दारू पीते हो, वो चलता है। देखो ये फीडबैक लूप है, मतलब खुद के आप जो बोलते हो वही पलट के वार हो जाता है।
और फिर वो झगड़ा शुरू होता है. सो फीडबैक, डू आई डिजर्व टू गिव फीडबैक, पहले तो ये जान लो. एडवाइस देना बहुत आसान है, पहले खुद के गिरेबान में झांक के देखो कि एम आई केपेबल और डिजर्व टू गिव हिम फीडबैक, और इज ही वे अबाउट मी दैट शुड आई गिव हिम फीडबैक, और ही नोज. या अभी तुरंत अभी कल मैंने गलती की, मेरी फ्रेंड बोली कि बहुत सर दर्द हो रहा है, तुरंत बोला अरे क्रोसिन ले ले. मैंने बोला अब मुझे सोचना चाहिए कि उसको अकल नहीं है क्या? अगर सर दर्द हो रहा है तो क्रोसिन लेना चाहिए, ये सबको पता है, मुझे बोलने की जरूरत क्या थी? शी जस्ट वांटेड टू शेयर हर पेन, कि वो दर्द हो रहा है उसको शेयर करना था, मुझे चुपचाप सुनना था मुझे. तो लिसनिंग is enough sometimes. You don't have to give any feedback. Somebody is sharing something, especially the soft, the lowest point of your life. चुपचाप सुनना भी हमको मुश्किल हो जाता है कभी कभी, हम बीच बीच में टोकते हैं. We don't listen to the other person with an intent to understand that person. We listen with an intent to reply. सामने वाला कुछ चैटिंग कर रहा है, कुछ बोल रहा है, तो कब वो सामने वाला बकबक करना बंद करे और मुझे बोलने का मौका मिले, वो हमारे मन में चालू रहता है. एंड वी डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन. ये बहुत कॉमन चीज है. ठीक है, इतने लोग मुझे आते हैं ना, अलग अलग देशों से, अलग अलग स्टेट से मिलने को मुझे. आई ऑलवेज अलाउ पीपल टू कम एंड मीट मी. दे ऑलवेज राइट इन द ईमेल, आई हैव मेनी क्वेश्चंस, आई वांट टू आस्क यू मेनी थिंग्स. और जब मिलने आते हैं ना, दे ओनली टॉक फॉर 1 hour. मैं सिर्फ सुनता हूं उनको, और वो आप क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं, उनको बस उनका जो भी पिछला क्या क्या से, हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है. वी हैव ऑल हैव सम हॉरिबल पास्ट. We all have our own shit to deal with, and we all think that my shit is bigger than your shit. We all think so, right? तो ऐसे माहौल में where everybody want to talk, want to vent out their frustration, want to tell that my shit is bigger, if you find somebody, one person who listens with utmost empathy to understand that person's feeling by trying to get in issues, वो भी फीडबैक ही हुआ है. कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है एक्चुअली, बस सुनना है. आजकल मैं यही करता हूँ. 1-2 घंटे लोग आते हैं, बोलते हैं और चले जाते हैं, और मैं कुछ सीखता हूँ. मतलब वो मुझसे सीखने को आते हैं, कुछ बुकलेट गाय से मिलने जाना है, कुछ सीखना, और कुछ नहीं, मैं ही सीखता हूँ उनसे. वो सिर्फ बोल बोल के वो चले जाते हैं, और उनको लगता है कि अरे वाह, बुकलेट गाय कितना डाउन टू अर्थ है. मैं कुछ करता ही नहीं हूँ मैं एक्चुअली. राइट, तो सुनना, चुपचाप सुनना. एंड देन होता क्या यूजुअली, जब कोई शेयर कर रहा है अपना नाजुक पल या कुछ कुछ पास, कुछ पेन, so what we do is we turn the focus to us, और फिर हम हमारा शुरू कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक दोस्त के साथ जा रहा था गाड़ी में, आई वॉज ड्राइविंग द कार एंड आई वॉज सपोज टू ड्रॉप हर टू पुणे. सो वो मेरे गाड़ी में आई थी और शी हैड आस्क्ड मी अ रिक्वेस्ट टू, आई वॉज एनीवे गोइंग टू पुणे. तो मैं बोला कि पुणे के जस्ट पहले उसको ड्रॉप करना था. और जैसे ही हम पुणे को रीचिंग, ह्यूज लाइन ऑन द बस स्टॉप, और कड़ी धूप थी बाहर, और यंग बच्चे बस स्टॉप पे खड़े थे, तो कुछ शेल्टर भी नहीं था. और मुझे लगा कि अरे यार देखो ना, कितने बेचारे धूप में खड़े हैं ना, बैग लेके कोई ऑफिस जा रहा है, और कितनी कड़ी धूप है. तो वो लड़की क्या बोली पता है? कि हाँ, एक जमाना था मैं भी वैसे खड़ी होती थी पहले. मैं बोला कि अभी तो ये नहीं है ना सिचुएशन, तुम्हारे पास स्कूटी है. हाँ हाँ, मैं बस बोल रही हूँ. दैट्स नॉट द पॉइंट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एम्पैथाइज विद दोज पीपल दैट वी आर इन एसी. No, we should be grateful that we are in AC, और हमको वहां पे खड़ा रहने की नौबत नहीं है आज. We should be grateful. पर उसने क्या किया? She went to her past and tried to sympathize, self sympathize, that मैं भी ऐसे करती थी पहले. इससे कोई सिंपैथी नहीं होती है. I did not generate any sympathy for her. She might have thought that I'll sympathize with her, but मुझे ऐसा नहीं हुआ. I was sympathizing what I'm seeing. मैंने तो उसको देखा नहीं ना कभी बस स्टॉप पे, मैं लोगों को देख रहा हूँ अभी. So I empathize with those people, right? So never turn the focus. सामने वाला कुछ बात कर रहा है, especially कुछ नाजुक मोड पे कुछ बात कर रहा है ना, तो never interrupt and turn the focus on your pains. Never do that. अगर कोई बोल रहा है कि अरे मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ है, अरे हाँ रे मेरा भी 2 साल पहले हुआ था, अरे बहुत दर्द हुआ था मुझे. अरे अभी उसका दर्द हो रहा है ना, उसके बारे में बोलो ना, तुम्हारा हो चुका है ना पहले. होता है ना ऐसे. आई थिंक इट्स वेरी कॉमन, हम सबसे होता है, मेरे से भी हुआ है. एंड देन आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट दैट पर्सन इज सेइंग. कुछ और ही मत निकालो. लीड दैट पर्सन, डिग डीपर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, गो डीप.
then that person will start falling in love with you, will start liking you. ऐसे friendship बढ़ती है, ऐसे relationship बढ़ते हैं. Alright? So ये बहुत चुप रहना भी एक feedback होता है. Yeah. Yeah, I think I've covered enough, and it's exactly 8 o'clock. Dharmendra, I'm not sure, Shantanu, if we can take questions because they have some pre-planned schedule. Let's see what Dharmendra says. Yeah, Dharmendra, over to you. You can give feedbacks on my talk. Thanks for the feedback. Thank you so much. Yeah, Dharmendra, are you there? As usual, Shreya and I was talking about, Shreya asked me which book this week. So I said, thanks for the feedback. Shreya boli, which feedback? Which feedback nahi, book ka naam hai, thanks for the feedback. Yeah, the name was little. Yeah, you are mute, Dharmendra. No, I'm not mute. Your phone nahi tha, just one second. Can I be heard by others? Yes. All clear. No, I am not mute. Thank you so much, Amrut. As usual, always a lot of, from a very young man, we get a lot of sage wisdom. And so that's again very good. That's also feedback for you. And feedback for people who are here, that we are very fortunate that Amrut is with us every month, shares one beautiful book, saves us all the time of not having to read that book. I'm very slow in reading books, so just listening to you makes a lot of sense. Thank you so much, Amrut, for as usual being a partner to our mission of educating financial advisors and mutual fund distributors. And today I am going to share with them a very interesting tool, a business tool, because we have called this the business clarity tool. So the whole idea is that in our business, most of the people are often confused about मुझे कितना मेहनत करना चाहिए business में, whether my business is good enough or not, whether it is large enough or not. Do I need what size of business do I need to get to? Do I need to, if I'm 50 crores of assets under management, is that good enough? What is good enough? Do I need to keep working hard? Do I need to keep working hard? So because we are actually the slaves of our past. So हमारा past का हम slaves हैं. Because whatever we have seen happening in the past, we love to not question anything and keep on doing things. Okay, so this basically what it means is, let me give you an example. For example, a doctor is there and you are like a doctor, financial advisor is like a doctor. But we are very lucky that we don't have to see so many patients every day. So you are like a doctor, you have a clinic, and you have, let's say, initially you're not getting enough patients, so you are very unhappy. You want more patients. So God is kind, he starts giving you 10 patients a day. Then it becomes 15 patients a day. Then it becomes 20 patients a day. Okay, and you initially start feeling very, very happy that I'm getting more patients a day. But a time comes when you'll get perhaps 50 patients a day, and then you are confused. Ye success hai ya kya? Ye success ko main kya bataun? Is it a happy success or it is a sad success? तो हमारे लाइफ में ये दोनों चीज होती है. एक टाइम ऐसा होता है कि पैसे ही नहीं होते, वो तो बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है, एंड वी हैव टू गेट ओवर दैट. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. पैसा उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, एंड पैसा बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव सीन हार्डशिप्स. एक बार हमने हार्डशिप्स देखा है तो फिर हमको बोलते हैं कि पैसा ही बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है, एंड वी शुड लव इट ऑल द टाइम. ओके, तो लेट अस वर्क हार्ड एंड कीप ग्रोइंग. बट द अदर एक्सट्रीम इज दैट जब बहुत ज्यादा काम होता है और वो पैसा जो हम एक्स्ट्रा कमाते हैं उसका शायद you'd rather have extra time with your family, with yourself, relaxing, going for a holiday. So all these things come to our mind. But हम जब business करते हैं as a mutual fund distributor, and most of us are not running companies, we are doing it individually. तो कभी-कभी हमको समझ में नहीं आता है कि हमको ब्रेक लगाना है, एक्सेलरेटर लगाना है, क्या करना है नेक्स्ट, व्हाट इज द राइट वे, मुझे नेक्स्ट मंथ कितने SIPs बनाने हैं, मुझे कितने लमसम लाने हैं, मुझे लाने हैं, या डू आई नीड टू हैव अ टीम टू सपोर्ट. So these are the kind of situations we often get into, and इसी को keeping this in mind, we have created a very powerful business tool. Okay, इसमें आपको ये पता लगेगा कि with this tool you'll come to know where you stand in your business. आप कहाँ पे हो अभी.
and based on that, मुझे कितने customer को मिलने चाहिए next month? Should I hire people or not hire people? Half the time, we don't even realize that our business has grown, our revenues have grown, and you are very much in a position to hire people, to design a system and make them work. But हमको लगता है कि enough नहीं है. हमको इसलिए लगता है कि enough नहीं है because आपके पास ये tool या ये calculator नहीं है. मैं अगर आपकी बहुत सिंपल चीज है, सिंपल लॉजिक में ये कैलकुलेटर बनाया गया है, बट ये कैलकुलेटर को आप देखते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ पे हूँ और मैं कितना मेहनत मुझे करना चाहिए, मुझे खुद कितना मेहनत करना चाहिए, मुझे कंपनी खोल के अपना सिस्टम से मेहनत करवाना चाहिए या मुझे ही करना चाहिए. इस सारे चीज की क्लैरिटी आपको ये टूल से मिल जाएगी. तो मैं आपको ये टूल दो वे में दिखाऊंगा. फर्स्ट आई विल शो यू इन एक्सेल. And then I'll show you in the tool that we have created on our website. It will be available on our website, not now, but it will be available on our website around the first week of July. Okay, but we will show you this, and this is only one of the calculators. In our Pathshala Pro, we've been telling you about calculators. तो आपको समझाना चाहता हूँ कि एक calculator कैसा है. अगर time होगा तो एक second calculator का भी I will show you an idea, because these are the things that can change your life as well as the lives of your client. So let me just quickly move into sharing and go to the calculators. Ashish, you help me whether if things are not okay, let me know. Yes, sir. The Excel is visible now. Yeah. The business calculator is visible, right? Yes, sir. Visible. Yeah. So friends, here is a very, very simple calculator. Okay, but this is very relevant. Here you have the returns that you are assuming. So let's say I am assuming 12% returns. Here is the brokerage that you are earning. Let's say I take 1% brokerage. I can make it less as it was less. Now here I have my AUM, and this AUM is basically an AUM of 50 crores. It's a 50 crore AUM, and SIP book size is 1 crore. Okay, now many people in this business may be having 50 crore and maybe SIP book of 50 lakhs. Let's make it a little more common. Okay, now I have a SIP book of 50 lakh and I have a business of 50 crore. In this case, and if I am making 50,000 rupees SIP every month, I'm trying to get new business. And I'm also attempting to get a lump sum of about 10 lakhs rupees every year. Okay, so this is the scenario. In this calculator, if I put number 1, I'll come to know in the first year what is my brokerage and what is my cumulative brokerage. But cumulative brokerage is the same ही होगा first year में. I can go to the 5th year and I can know मेरा 5th year को brokerage कितना है और मेरा cumulative brokerage कितना है. तो यहाँ से आपको क्या पता लगता है? I mean, you can obviously see these numbers down also. यहाँ से आपको पता लगता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं, it's a massive business of compounding. कभी कभी हम खुद भी नहीं रियलाइज कर सकते हैं कि कितना इसमें पावर है ये बिजनेस में. Number 1. Second is we are getting richer and richer, but we continue to live and spend in the old-fashioned manner जब हमारे पास पैसा नहीं था. As a result of which, what we are losing is opportunity. अपना टाइम खत्म होते ही जाता है और हम वही तरह से जीते हैं जिस तरह से हम जी रहे थे. इससे क्या, जितना भी बिजनेस बढ़ता है मेरे कंधों पे लोड ले रहा हूं. Okay, so in this case, if you see, even on the 4th year itself, you are earning 1 crore 11 lakhs 18,717 as a brokerage in 1 year. Okay, and by that time, your cumulative brokerage has become almost 3 crores. So these are numbers far, far exceeding our expenses, our normal expenses. It's an indication that you need to start looking at yourself as an entrepreneur and not as a practitioner. Let us take the example कि आप ये पोजीशन में हो, आपको कुछ भी नया बिजनेस नहीं करना है, आपको जस्ट रिलैक्स करना है. क्या निकल सकता है लाइफ? Do you think is the chat box on, Ashish? Sir, just 1 second. It is on. Yeah, so now look at this scenario over here. 50 crores of assets under management and a SIP book size of 50 lakhs.
and just see how much of wealth that is there in the next 15 years. Okay, so when you see this, you need to wonder कि मुझे ही आगे जाके खुद ही client के सामने बैठ के नए client को ढूंढ के लाना है, उनको समझाना है, या मेरे पास काफी पैसा है, अब मैं let me create a management team, let me create a sales force, पैसा है, let me invest in my own business. नहीं तो क्या होता है कि ये जो excess पैसा होता है, हम लोग म्यूचुअल फंड खरीदते हैं. जब म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, हम क्या करते हैं? हम दूसरे किसी का बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं. वी आर गिविंग कैपिटल टू सम अननोन पर्सन इन इंडिया समवेयर, और वो आपका ही पैसा लेके अपना टीम बना रहा है. पर हमको हमारे बिजनेस में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हम टीम नहीं बढ़ा रहे. इतना ब्यूटीफुल बिजनेस है, जो ट्रेल इनकम डिपेंडेंट बिजनेस है, जो इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस, if we don't have confidence, how can we have confidence in some manufacturer of pipes, manufacturer of some utensils, जहाँ पे there is no trail, there is no guaranteed business. फिर भी we are willing to put money in mutual fund, but we are not investing in our own business because आपके सामने ये कैलकुलेटर नहीं था, आपको पता ही नहीं था कि क्या आपका कितना वेल्थ है और कितना वेल्थ बनेगा. You had no idea. अब let's say I am reducing this to 75 basis point. Okay, 0.7, let's say 70 basis point. You are still enough money. Let's say I take the returns down to 10%. You are still having enough money. Do you realize how much money? Without even trying to do new business. And moment you do a new business of, let's say, 1 lakh rupees SIP in a month, this is 1,000, 10,000, 1 lakh. You see how great the business grows. If I can make my SIP per month 2 lakhs rupees per month, and then just see the magic of the business. So this calculator is a very, there are a lot of, see, if you can see, there is 4, 5, 7, 8, 9, 10, and then 11, 12. A lot of rows and columns have been hidden. There's a lot of complex mathematics that has happened behind this. A lot of formulas. What you are seeing is a very simple version, but it is solving a very, very big problem. इससे आपको ये पता लगता है कि मेरे को next month कितनी मीटिंग करनी है, कौन से टाइप ऑफ क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है, इस टाइप के साथ ये टाइप के क्लाइंट के साथ मुझे मिलना है या नहीं मिलना है. Is it worth wasting time with so and so person? Should I hire a team to look after small customers? Should I only look after big customers? Should I hire a leader to look after big customers and I focus on building my brand and building my business and building a new branch? These are the kind of thoughts you need to think, because any doctor or a shopkeeper graduates as business grows, and he can't continue to be a doctor and he can't continue to be a shopkeeper. He has to move and become a businessman. Even a doctor has to figure out how to handle 500 patients a day or 200 patients a day. He can't do it alone. He has to create a system. Okay, so this is, and when a patient comes, you have no choice, but you have to create a system. We don't have anybody forcing coming to us that we have to immediately do it. But yeah, calculator gives you a very, very good perspective. So just a second, sorry to break your flow. There is a question in the chat box. Brokerage actually 70% dikh raha hai on screen. Oh, sorry. We are typing error. Yeah. 1%. Sorry, my mistake. 0.7. Yeah, that's okay? Yes, sir, it's fine. Yeah, now it's okay. That's okay. There are also other queries that with TR cut agar 0.4 jata hai ya 0.45 jata hai. 0.4 डालो, Yes. 0.4 डालो, 0.4 डालो, 12% रिटर्न देखो. तो जो भी करना है आप करो. ओके, एक चीज अपने को पता नहीं कि यहाँ से 15 साल के बाद हम जिंदा रहेंगे या नहीं, पर एक चीज पता है कि अपना पैसा बहुत होगा. तो इसके लिए कंपनी बनाओ और कंपनी को ये ब्रोकरेज लाने दो, सो दैट योर फैमिली मेंबर्स आर आल्सो प्रोटेक्टेड. आपका सक्सेशन प्लानिंग हो जाता है, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ वेल्थ दैट इज देयर इन द बिजनेस दैट कैरिंग ऑल दिस वेल्थ ऑन योर पर्सनल नेम इज द बिगेस्ट रिस्क. एंड आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर 1 decade बाय नाउ. सम पीपल आर चेंजिंग, सम आर स्टिल इवैल्यूएटिंग. ओके, इवैल्यूएट करते करते अपना टाइम खत्म हो जाएगा. So here there is another thing, you can add 10 lakh business if I want. 100, 1,000, 10,000, 1 lakh, 10 lakhs. Look at how the things change. And here if you want, you can just change 9th year mein kya hoga, 15th year mein kya hoga. Okay. And just like this calculator, this is a basic calculator, and our calculator will look like this. You can see over here. Over here there is again returns 10%. 1 second, let me shut this. Somehow there's a disturbance. Okay. Our calculator on our website will look like this.
is exactly the same. You can fill in the returns over here. I can move this slider and make it 12 if I want. I can move this slider, make it 11. I can move this slider, reduce it to 0.7 and see the same thing is happening over here. If I put it over here, how much I make on the 9th year, I'll get my 9th year value. So this is how the calculator you will see on our website. Or we have been telling you so many times, आप पाठशाला प्रो ज्वाइन करो, आपको इस तरह से कम 7 to 10 calculators मिलेंगे जो आपका business बढ़ाएंगे. And we are creating entire syllabus under a heading called spiritual financial planning. मतलब लोगों के लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं. All problems of people is based on money. Money is the root cause of majority problem. Whether it is father, son, two brothers, it is like that. So we are creating entire syllabus under the heading spiritual financial planning. Those stories will be put on the website. The calculators will be on the website. The scenario will be on the website. So you all will get opportunity to grow your business, to look at different markets, to have different kinds of conversation with clients, only based on this, and meaningful conversation like a genuine planner. All that you can do. So this is the, what's the time, Ashish, now? Sir, it's 8:17. 8:17. So I'll try and show them also another calculator then. So this is one calculator that I have shown you. I'll quickly show you another calculator. And I'll also draw up the scenario, the story, the scenario that I'm saying, why we are calling it spiritual financial planning. You'll understand from the second calculator. It is called this is called the marriage calculator. Okay, I have called it the marriage calculator. We'll use the same principles for different scenarios, but in this case... Dharam sir, sorry to interrupt. There are people confused, like, you're saying your website may available hai. Website means it is not available to all the public. It's only available to our Pathshala member. Where you have to log in. If you're a partial member, you will be getting the login access, and there you can access all this calculator. Okay, it is not available in the open public because people are asking, can you? And also the recording of all the sessions are available to all our Pathshala members. If you're already Pathshala member, the recording you can access each and every session that you attend. Okay, so if you're not yet a Pathshala member, you're most welcome to become, join the Pathshala member. You can avail all these benefits. There are many more. So first understand this. Okay, shall I continue, sir? Yeah, please continue. Yeah, so here is another scenario which I've drawn up from when you look at people today, more and more people are getting wealthier. Again, the people who are the HNIs, richer people, they have a lot of money, but their thinking is like how it was some 25 years back. कि मेरे बाद मैं बच्चों को कुछ दूंगा, और अगर मैं शादी करना है बच्चों का तो धूमधाम से करूंगा. I want people to know in the शहर that what a wealthy man he is, how much money he has spent on the wedding. So here I've taken the case of it's a marriage calculator. I've looked at the scenario of marriage. In marriage, what parents can actually gift their children. And today's world is getting more, and while the opportunity is big, India is a big story, lot of entrepreneurs coming up, and the India growth story is being touted everywhere across the world. But at one level, jobs are getting very, very uncertain. High salaries are there, but the tenure of jobs are reducing. So the scenario is very, very uncertain, not how it was earlier that I take a job and I work 30 years in the company and I retire from the same job. Those days are gone. So here is a scenario where if I were a parent and my child is getting married, what I can do. So instead of spending a lot, I can do a good wedding, but can I, instead of spending 2 crore, I'm talking about a well-to-do family who are spending 70-80 lakhs on weddings. Okay, so even if they have a budget of 1 crore, so instead of spending 1 crore, can I do one thing? I don't spend 1 crore, I spend only 40 lakhs on the wedding, and 60 lakhs I decide to gift it to my child. Okay, 60, and now here I've taken inflation at 4%, we can change it to 5%. Then we have investment returns at 12%. Expenses per annum of the couple, I'm taking a minimum expense of 50,000 rupees a month because I want to gift them a gift that nobody has ever thought of. I want to gift my children financial freedom. Okay, which means that they can live a 50,000 rupees lifestyle ka zindagi for the rest of their lives. Okay, so this is the kind of gift I want to give.
I can decide that, let's say if the couple, let's say that my child is at the age of 28, let's say I want him to become financially free after 35. So the 60 lakhs I've given, I'm going to invest. I'll recommend that he invests for so many years, from 7 years, and after 7 years, he starts withdrawing. So if he does that, look at the money that is there created. Okay, balance is so big. Matlab, that person can live this life forever, is financially free. He can in fact increase his standard of living also. He can make it instead of 6 lakhs, he can make it 9 lakhs, and still there will be money in the system. Now, supposing we think that let us make him financially free a bit earlier, not at the age of 35, but the age of 33. You see, the moment you do, these two numbers have come up. Okay, let's say we want him to become financially free at 31. Just 3 years from now, he becomes financially free at 21. Let us reduce the returns to 10% and see what happens. See, the graph slightly changes. Okay, maybe I can make even 12 lakhs rupees ka lifestyle. Even then, there is enough money. So just see how much wealth is possible. Let's say 60 lakhs ki jagah pe 40 lakhs is what I can gift. This is the 40 lakh scenario. So in these scenarios, if you see, people can gift their children just 40 lakhs of rupees, but they are giving them a lifestyle, a financial free lifestyle forever. But up to this age, from year to year, so many years, journey of freedom. So this is the other calculator which we have created, and this calculator will again be put on the website, just like I gave you the look and feel of how the website calculator will look. This is created on Excel, but this calculator just goes to show that there are a lot of social problems which can be sorted out through the use of simple calculators and stories. There are another scenario where parents are having enough money, but they don't know the power of their money, and the children are not well off. And the parent thinks, I will gift my entire, or whatever I have, the child will get when I pass away after 20 years or so. But if the parent were to give the child just some help of like this 40 lakh, 50 lakh, or even the parent were to give every month 40,000, 50,000, the wealth of the parent doesn't get depleted. These are the stories, these are the presentations, these are the calculators which will be there on the website. You all have to go use it, and this opens up a market for you, opens up discussions for you, and creates a very different scenario. So the reason I came here was I wanted to show you the calculator we've been talking about in our Pathshala Pro package. Bolna ek cheez hai, likhna ek cheez hai, dikhana dusri cheez hai. So we wanted to show you. So we basically have 5 C's, if you see in our Pro package. One is calculator C, one is courses. We have a HNI mastery course, we have employment management course. So we have multiple courses, 3 to 4 courses. Then we have a conclave, that is an annual conclave in Mumbai. A full day conclave will be there, so you get access to that. We have content on our mobile app, so you'll get personalized images which you can use, and a lot of articles. Very interesting app. Currently, it is freely available to everybody, but soon it will become only for members, and the free section will become extremely small. We also have a class every Thursday, like we have, and many other little things are there in our Pathshala Pro. So if anybody believes that this is serious value addition, it will seriously help your business. If you can seriously think about it, how next level operate, then I will ask you to participate in a simple poll whether you are interested to be part of the Pathshala Pro journey ahead. We will continue creating interesting new stuff. We have a very good team and a lot of research people who keep working on it. You'll get awesome stuff on our website. It's definitely going to be the best website in the industry and with a lot of value addition. So if you can answer the poll. Dharam sir, can you stop the screen share? Yeah. Yeah. Yes, all the recordings will be available. If you are a Pathshala member, if you are existing Pathshala member, you can already see that the recording is available to everyone. Okay. And yes, not only the जो आप join करने के बाद जो recordings होगा वो even पिछले 2 साल का भी recording आप access कर सकते हैं, even if you are becoming a Pathshala member now. That is absolutely it is available. So if you participate in the poll, so that we know if you are interested. If you are interested, we will definitely contact you
and give you Is the the poll shared? package. So Yeah, can Ashmita is asking, Ashmita, just visit our website, nextlevel.in, with the landing page. that Shantanu, we have yes, given. welcome. Shantanu, you joined yesterday. Most welcome. And I'm sure you'll have a very good journey with us. Yeah. Because we are Ashmita, committed to have to create share the tools poll. and products for the betterment of the community. We are we work as if we are working on a vision and mission. We don't work in any other way. We want to bring change and transform the ecosystem. Therefore, we do stuff which nobody even thinks about doing. Dharam sir, can you share the poll? It would be in yeah, your. those who have already joined, friends, from 1st July onwards, Okay, you will I'm get, sharing the poll. Okay, I'm just. you will be getting your new version and the new subscription. It will I've be launched the coming. poll. Whoever is interested, put a yes so that we can reach out to you. Can you all see the poll? I don't see it, any response. Yeah, I can see. People are Yes, sir, participating. it's launched now. So only those who are already, if you have made the payment, you don't have to answer the poll. You're already in, like, you don't have to do it again. And if those who want to join, only those people participate in the poll, because we don't want to disturb everybody. Some people have Are you problems. seeing participation over here? This is not working in my screen. Yeah, I can see No the problem, sir. We participation. can see. It's working, sir. It's working. Okay, so whoever, just visit our website, nextlevel.in website. So you will find everything on this website, nextlevel.in website. If you go here, no more section, there's a Pathshala section here, and also on some of the video also we have put, like, where you can refer the full details. So you can go here, you can check what is available, and these are all the 12 modules we have, 12 benefits, 12 value addition that we have. And the actual price is 15,000 plus GST. And if you are joining using this coupon code, which is limited period के लिए available है, 3,000 का flat discount मिल जाएगा. So your price will become 12,000 plus GST. So total with GST 14,160 for 1 year. And if you're going for 2 years, you will end up saving almost 10,000. In case if you have a budget, if you want to be locked in, then you can go for 2 years also. It's up to you. Yeah, guys, participate in the poll. Only 69 of 70 people have then maybe many people have already joined. That's the reason. So we'll keep it for another 30 seconds or maybe 1 minute max, and then we'll end the poll. And these are all the value addition. If you get a time, you don't have to join, just go and serve, or you will come to know what we have. Swami, just hold on 1 second. Just show the speakers. So we have, it is not that anybody and everybody speaks on a platform. We have specific speakers. We have Mr. Vijay Mantri, Mr. Karan Datta. You just heard Amrut Deshmukh. So we have specific speakers and very renowned speakers who come and talk on this platform. It is Renowned not a speaker, random platform. Focus session, not just एक बार आके 15 मिनट के लिए और 20 मिनट के लिए बात करके चला गया. One speaker is coming almost every month. Once they will be coming and doing one module. That is the kind of focus session. So you can say this. We have very specific speakers. We don't people come and do any product promotions, etc. on this platform. We have created a new platform for all that. So Pathshala is a very serious program. No calling people to promote product XYZ. We have another platform for that. It's not Pathshala. So you can explore this. These are all you will be getting if you are becoming a part of Pathshala member. Some of the facility will become available from the moment you joined. The access is given to you from 1st week of July, because our new membership starts from 1st week of July. So whoever is already joined, you will be getting access from 1st week of July for the new version. Okay, Pathshala Pro version ka access you will get from 1st week of July. And some of the features, as and when we develop, and because we want to do a session and then give, we don't want to just give it to you because you don't know how to use it, even if we give. What is the story you need to tell? You don't know. So courses, calculator, as and when we are, we'll be doing the session, and then we'll give you the calculator to use it. So like that we will be doing. Okay. So you will be getting all this, as and when because we have almost a year to cover all these things. Okay. Yes, I think Ashish, people have gone to sleep, so only 75 people have participated. So you can stop the poll. I'm ending the poll, yeah. Yeah. All right. So those who want to join, the landing page link has been shared. You can click on that and make the payment and avail that special discount. Also, friends,
If you are making for the Amazon voucher is the you have a chance to win 5,000 rupees Amazon voucher. So you're in the lucky draw. So Kirloskar is asking what is the difference between present Pathshala and Pro. There are all these features that we spoke about was not in part. Earlier it was just Pathshala, just coming on Thursday and getting educated and getting recording. Now there are multiple tools. There are a lot of technology tools are available. There's something called BioLink which is available. The calculators are available. Courses are available. HNI Mastery course is an 8 to 9 session course. HNI Mastery. That is fully available. Employment development courses are there. That is available. So you can't compare Pathshala and Pathshala Pro. It's a different thing altogether. Pathshala Pro is made for the world post-COVID. Pathshala was during COVID. Everybody was stuck up at home and we had a program. Now we have created a website to handle the requirement of a post-COVID era. So basic Pathshala is every Thursday. आओ बैठो सुनो और सीखो और जाओ. That is basic Pathshala, normal Pathshala. Now Pathshala Pro is much beyond that. What you are getting: calculator, courses, conclave, tech hacks, and then your productive tools. So a lot of things you are getting. So you can go and explore on the website. You can check that. Okay, and if you need any details, please speak to our team members. So go to website, you will find our team member numbers. You can call to them and speak to them. And yeah, if you have any questions, we can take your questions. We are done for the day, friends. Those who are feeling hungry, you can feel free to go, leave. And if you have any questions about Pathshala, we are here to answer the questions. You can ask your question. 1 year ka fees, if you are signing up now using this coupon code, it is 12,000 plus GST. Otherwise, your fees from next week onwards, it will become 15,000 plus GST. Okay. Yes, Nitin. So my question is that whatever Excel sheet calculator that you're providing, जहाँ पे input value डालना है, would there be an explanation provided in the Excel sheet so that we know? We are not going to give you Excel. Excel is our backend, what we are creating. So what you saw that version, the user interface on the website, you put the parameters. Okay. And not only we are going to provide you what Dharam sir explained in 10 minutes, we are going to do a separate session for each calculator, each concept, each tool that we are going to give. Or there will be a tutorial on that, how to use it. There'll be a demo tutorial. So anytime you can click and see the demo tutorial if you are getting stuck up. Right. And we are working on something big, you will experience it. Right. The reason why I asked is you had also shown on the website whatever Dharam sir showed on the Excel sheet, but वहाँ पे लिखा नहीं था. So for my specific question was, उसका वहाँ पे लिखा नहीं था, इसलिए मैंने आपको क्या बताया कि ये आज नहीं है, थोड़े दिन के बाद जाएगा. अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, तो वो कैलकुलेटर में तो थोड़े चेंजेस हो रहे हैं. And but I just want to give you a look and feel. It is not an Excel sheet look and feel. It will be a very beautiful interface with sliders and all those things, so that it's an interesting calculator to use. You will have a recording also where a demonstration will be there. So whenever you forget how to use, click and you'll get to see the demo. Oh, thank you. Srirang, agar aapne question is basic Pathshala will be continued. Also, if you are already Pathshala member, agar aapka हमने आपने 2024, 25, 30 का अगर आपने सब्सक्रिप्शन पहले लिया हुआ है, हमने प्रॉमिस किया हुआ है, आपको थर्सडे बिल्कुल आके अटेंड कर सकते हो. आपका वैलिडिटी रहेगा अगर हमने प्रॉमिस किया है, बिकॉज वट एवर प्रॉमिस दैट बेसिक विल, मतलब थर्सडे आपको अटेंड करने के लिए अलाउड रहेगा. बट जो एडिशनल जो 90% जो फीचर्स हम ऐड कर रहे हैं, दोस विल नॉट बी अवेलेबल टू द बेसिक पाठशाला member. But if your Pathshala is expiring, then you will not be, it will not be available. तभी आओगे जब हम बुलाएंगे. Is it only Hindi or predominantly Hindi? So the thing is, whenever you have a speaker who is comfortable in English, he'll be speaking more English and less Hindi. And wherever you have a speaker who is does not know English. Now imagine you have a speaker who does not know English. Now, how can we force him to speak in English? So he's a speaker. We have invited him. But fortunately, most of our speakers are such that who know both the languages. So they would be speaking mix of both the languages, because pure English also doesn't work, because many people are not comfortable in pure English.
Okay, so that also is a problem. So we will be mixing it up in Hindi, English, but I think the message that has to be passed on will get passed on. Should not be a problem. Plus, you get access to all the recording, and if you have any doubt, we are always there. Yeah. So friends, Pathshala is just not that you come and attend and the Thursday in the English. It is not just between the Hindi English. The value addition that you're getting, calculator, which language you will use, creative, which language you get, 300 plus creatives that will be giving in 6 languages. Okay. 300 plus creatives in 6 languages for personalization. You can put your personalization, customization, which you can use through our app. Mobile, everything on it. Vishwanath is saying, sir, if there is any bundle course where we get all the products of NLE, we are giving you 7 courses in this, 7 courses as a bundle. We are giving FCDP focused competence development program, which you can use it for your new recruited employees. Sorry to just interrupt, but the calculator must have given people an idea how much of wealth they have. So the last thing is to worry about these things. This is what's more important is whether you can spare time and whether you have an attitude and desire to learn. The money part of it, looking at your brokerage and looking at the way we forecasted the amount of wealth that you have, you will never fall short of money. You may fall short of anything else, but not money. So that's the last thing you need to worry. This is very low cost programs. But what's important is come with the attitude to learn. True. Yeah, 2 years, 24,000. 2 year, 21,000 plus GST. That's that you're saving almost 10,000 because otherwise actual fees it goes to 35,000 with GST 2 years. 15,000 plus GST into 2 years. Friends, we have a conclave. That conclave cost for the conclave calculator, so many things are there which you're getting. We are actually, this is at a low cost. What we are giving, the idea is not to make money from this. Idea is to we want to give massive value to our members who are following us, there with us, doing our training programs, MFP, UFP, CFP, so many programs they are doing. So we wanted to create the ecosystem where they can where the tools which can help them to grow their business. Okay, that is why we have created this Pathshala, Financial Pathshala Pro, because a course join karoge, after that course you will go. There is no connection. So we want you to connect it with us, and that is the reason we have created all these things. It's a community that we are building. We'll have a very good conclave in October in Mumbai. So this, if you join the Pro, you get free access to the conclave. And we'll have very good speakers also. You can see our panel of speakers. And we are also in talks with Mr. Kishan Sharma of HDFC. Even he is likely to be in our panel of speakers. So we'll have one of the best panel of speakers. So you all will get to really interact with quality people and get very quality inputs also. That will have a very positive impact on your business. So if there are, the conclave will be offline, Sriram. Offline in Mumbai. Offline, proper offline conclave, like they have. And that panel of speaker means not like just once come and they speak and go. They are on the right word I can say is on the board of speakers. Okay, they are there, they will be coming again and again and again. They will be doing the serious modules with us, okay, for our Pathshala members. I think yes, Shashank has raised his hand. Shashank? Yeah, yes, Shashank is one person we must appreciate. He always attends our Pathshala live every time. And every time since I think I know him for last 3 years. Shashank, since how long you are with us, Pathshala? No, it is very good. But what I actually wanted to just tell here, that actually we should learn the language in which we can learn anywhere and everywhere, from anywhere and everywhere. That means not only within India, but also outside the world. So we must have got some expertise in may not be mastery, but we should able to understand simple English also. Though to communicate to our investors, that is in their local language and others.
It is true, but everyone must try to achieve a certain level of awareness in English. Otherwise, it is very difficult. Actually, all the books are in English. Right. Yes, sir. Yes, sir. I agree with you. I agree with you. That is must. It's a basic hygiene that we need to. Do the video sessions of these esteemed speakers on your website can be available to view upon? Yes, of course. You will get access to 2 years of Pathshala. So you are joining now, you will get to see even what has happened in the past. You can get to hear those speakers. Actually, I have also subscribed for the next 2 years also. Yeah. Shashank, you are already there. Yeah, we saw that. Yes, sir. So if there are no more questions, then we can. Vikas, anything you want to say? You can ask Vikas to come and say the last words. Yeah, definitely. जिन लोगों ने यस बोला है, What are the exclusions of Pathshala members, if any? Everything is exclusion for Pathshala member. All this is available only to Pathshala. All the 12 benefits that we explained is available only to Pathshala member. If you are not a Pathshala member, once in a blue moon, we will call for a special session. You can come and attend and go. That is only for freeloaders, not seriously or no interested. वो लोग आएगा और जैसे अगर कुछ सीरियस बात होती तो भाग जाएगा. ऐसे लोगों के लिए वो once in a will be call and वो आके जाएगा. Pathshala is only for those people who seriously यहाँ पे आते रहेगा. Everything exclusive only for Pathshala members. तो free members के लिए बहुत कम है. जैसे even in the app they will get only limited images. Okay, and जो free मतलब जो they are not actually member. If they are not Pathshala, they are connected with Next Level somewhere or in some groups, not in this thing. So if you are a Pathshala member, everything is exclusive for you. Yes, Prem Mamtani ji, हमारे first. एक चीज रह गया स्पेशली, काफी लोगों का सपना होता है हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का कि हमारे क्लाइंट को हम खुद एड्रेस करें, हमारे क्लाइंट के साथ में हम खुद बात करें. तो एक मॉड्यूल है जो शायद बातों बातों में रह गया. इट्स अ इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम जो पाठशाला प्रो मेंबर्स को मिलेगा. सब कुछ आपको सिखाया जाएगा. आपके क्लाइंट्स को इनवाइट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, प्रेजेंट कैसे करना है और कॉल टू एक्शन कैसे रन करना है और इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस के थ्रू आपके बिजनेस को कैसे ग्रो किया जा सकता है. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल you will run in this Pathshala Pro. Yeah, this is called the National IAP. National IAP Day. Yeah, so we train, at one of the National IAP days, we had more than 200 people delivering IAP individually. They were individually delivering an IAP to their audience, but 200 such people, 200 such members did it over between 1 and 2 days. In 2 days' time, nearly 200 people delivered 200 different IAPs, each IAP for their audience. And we trained those 200 people to speak, to make a presentation, to invite, and to also end the session with a formal note. And also it led to business for them. So this is again a very unique thing which Vikas runs it under his leadership. So that's called the National IAP Day. क्योंकि इतना सब कुछ पाठशाला प्रो में दिया गया है ना कि आप काउंट करते कर थक जाओगे कि और यू विल सरप्राइज कि इतने लो प्राइस के अंदर कोई इतना कैसे दे सकता है. और यही खासियत है नेक्स्ट लेवल का. जो हम बोलते हैं कि वी आर मैसिव वैल्यू प्रोवाइडर, तो हम जो बोलते हैं वही करते हैं एक्चुअली. तो जब गो थ्रू कीजिए nextlevel.in पे जाके. We have one very important gentleman, Mr. Padmanabhan, sitting here. I had done that program in South Chennai. He was a person who had spoken to me there, and he was the organizer of the program. He is, I think, closely associated with IFA Galaxy, if I'm not mistaken. And Swami sir, that's Mr. Padmanabhan. Can you unmute yourself? Padmanabhan Joshi, right? No. Huh? This is Padmanabhan from Chennai. Yes, Padmanabhan. Hi, nice meeting you. Nice connecting with you. So that is Swami sir. That is Vikas. These are our team people. I had spoken about this spiritual financial planning on their platform. There was the first program on spiritual financial planning which we had spoken on your platform. So welcome to our program, sir. Happy to see you here. Thank you so much. Yes. And he has a massive Twitter following. So whenever he takes one of our creatives and uses it and he gives us the credit, on that day we get a lot of followers. Oh, great. Thank you so much, sir. Great. Welcome, sir. Thank you so much.
So we can, anybody, Shreya, anyone there to, or Ashish? Sarita Gupta, one-to-one session in this package. There is nothing called one-to-one session, but you definitely call and speak to any of our team members. They will, whatever query you have, Sarita, it will be addressed. Today's recording will be available in Pathshala. Friends, if you're already existing Pathshala member, the login is already created. In case if you're newly subscribed, this new version, all this will be available with you from 1st July. Okay, because we have to create access for every, we need to check the data and we have to do a lot of back-end work. So easily everything you will be able to access from 1st July. Even this today's recording, previous recording, 2 years recording, everything you can access from 1st July. First week of July. All right, so yes, Ashish, प्रेम जी आप कुछ बोलना चाहते हो? आप हमारे इनिशियल पाठशाला मेंबर में से है जो फिजिकल वर्ल्ड में हम करते थे. Yeah, Premji is the pillar of Pathshala. He is the first member. He came with 10 of his friends and we started the physical Pathshala. So Premji, आप कुछ बोल सकते हो सबको? Premji has a AUM of about 170-180 crores, and I think he has a SIP book size of more than 2 crores. And आपको ये calculator देख के पसंद आया होगा प्रेमजी? सर बिल्कुल, कैलकुलेटर की बात काफी हुई थी लास्ट वीक ही, हम और आप बात करते रिगार्डिंग दिस कैलकुलेटर एंड आप मुझे दिखाने वाले थे. सो समाव रह गया, आज मैंने देख लिया. सो डेफिनेटली विथ अ ग्रेस ऑफ गॉड आई एम फाइनेंशियली फ्री ड्यू टू दिस बिजनेस. बस दोस्तों, इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है ना, वो सही में पाठशाला का. सो प्रीवियसली आई एम डूइंग FD, इंश्योरेंस, फलान ढिकड़ा जैसे हम सब लोग भागते हैं. But after listening Dharam sir, Swami ji, and उसके बाद ही power of compounding, power of mutual fund, SIP and compounding, इसकी ताकत मुझे realize हुई due to इनकी learning की वजह से. and उसके बाद ही मेरी जिंदगी बदल गई. मैंने मैसेज डाला हुआ है, तो कृपया आप मत सोचिए. SIP, अगर आपके पास बजट नहीं है तो आपकी SIP बंद कीजिए, वो पैसा आप यहाँ लगाइए, आपको SIP करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. सो डेट इज माय वर्ड्स. कृपया आप इसका फायदा लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके बच्चों का बदल जाएगा, उसके बच्चों का बदल जाएगा. बिलीव मी. बस क्योंकि प्रेम सर का बच्चे का जीवन बदल गया है. अभी प्रेम सर का बच्चा अभी ये लाइन में काम पे आना शुरू किया है. वो दूसरे काम में जाने वाला था, बट अभी एक ये सन इज नाउ टेकिंग चार्ज ऑफ द बिजनेस. दैट्स व्हाई. Yes, yes. Only after listening पाठशाला जब virtual हो गया तो he joined me and listened and बिल्कुल गेम बदल गई. So बिल्कुल आप मत सोचिए, ये आपके इन्वेस्टमेंट जो भी आपने की हुई है, इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होगी आपके जीवन में. ये बात पक्की है. So दोस्तों, बस ज्वाइन कर लीजिए. Awesome. Superb. If you are facing, any of you are facing a payment issue, don't worry, try again or reach out to our team member. They will give you some alternative option. You have, if you visit, you can see the numbers over there. You can contact any of them. So they will, you just try. After some time, it will be done. If you have an intention to join, then don't worry, you will not be left. And if you don't have an intention, even if anybody forces, वो कुछ होने वाला नहीं है. And again, आपका destiny में लिखा रहना चाहिए कहाँ पे, कौन से screen में, कौन सी जगह पे होना चाहिए. If it is not written in your destiny on your this thing, आपको जहाँ रहना है, जहाँ पहुँचना है, हम कितना भी करेंगे, बात करेंगे, वो आपके पास नहीं आएगा. And वैसे बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं और निकल जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, because it is not written in the destiny. There, it is meant to be there where they are. Where they could be better position. I'm not saying they're not in the wrong position, but something they would have got, some different things would have opened up for them. A different kind of perspective would have got. But unfortunately, they are having only the, already they wear the specs. They don't want to wear another specs. That is the thing. So पहला जो specs जो पहना है, अगर नया जमाने का हाईटेक specs अगर आया है, फिर भी मैं ओल्ड वाला पहन के रखना है करके अगर उनको अगर है, तो हम कोई बदल नहीं सकते उसको. What do you say, Dharam sir? Yes, sir. Absolutely. आशीष, there are 100 people अभी भी है. एक बार अगर पोल को फिर से एक बार रन कर दो, हो सकता है प्रेम सर को सुनने के बाद में सबसे किसी का माइंड बदला हो. एक मौका इनको दे दो ताकि हमारी टीम इनको कनेक्ट कर पाए. Is it possible to relaunch the poll? Yes. Let me see if I can do it from my end.
नहीं वो उसको पहला जो किया है वो रिजल्ट चला जाएगा ना? नहीं होता है। that will be there. Can you do it, Ashish? Sir, आपके पास relaunch option. No, I'm just getting share results. I'm not getting a relaunch. You will have to right click 3 dots and relaunch. For relaunch, yeah, okay. I'm relaunching it. But first पहले वाला आंसर रहेगा? रहेगा। Yes. I'm relaunching it. But I can't see it. Even I can't. Is it working? Some participant can just quickly confirm if the poll is visible. No. No. Sufyan says no. Yes, It's Buran is visible. saying yes. Buran is already joined. Okay. Nish is already there, visible. World one is coming. World one is coming, he says. Visible 91%, yes. World one is. You can stop the result which was shared. Already, yeah, friends, if you have any question, please reach out to any of the numbers that is available on website. Nextlevel.in. Nextlevel.in is the website where you have to visit, and you will find all the information how to join this. Everything is available. Still, if you need any clarity, guidance, help, please reach out to our team. Yes, Subroto. Yes, you have joined. बहुत सारा लोगों का जिंदगी बदल रहा है, क्या बोलते हैं नितिन? Yes, very true. Good to see you. Thank you. I hope your problem solved of joining. You wanted Yes, he already joined. Santosh Kumar, he will join. Santosh, just visit our website and you can just click on the link, or you can make the payment and join, or you can contact if you need any clarity. We'll help you. So so this thing share results and stop it? I think it is already stopped. I think वो relaunch हुआ ही नहीं, I guess, poll. That मुझे- poll वाला ही दिख रहा है. You will have to stop sharing. ऐसे तो अगर कॉल में नहीं हो तो you can write your answer in chat box also. Acha, by the way, those whoever wants to join now, if you need any guide, you can put it in the chat box also. We'll check from the chat history and we'll reach out to you in case if you need help. You can put it in the chat box also. I want to join. All right, so yes, Ashish, Ashish, you can conclude now. you can conclude the session. Thank you so much for being with us till this time. 75 participants still at 8:53. We really appreciate your being with us, and your patronage is truly, we're thankful for that. Thank you. Bye-bye. Good night, everyone. Bye. Thank you very much, everybody. For more details, kindly visit the Next Level website, go to programs and select Financial Pathshala. Along with that, please remember to mention the discount code NLEFP Pro. So with that, thank you once again for making Thursday evening synonymous with learning and 7 a.m. synonymous with the Financial Pathshala. Pardon me, I just said 7 a.m. but जब 7 p.m. होता है तो भी हम सबका good morning ही हो जाता है पाठशाला के साथ. So with that, we bid you adieu and see you all in the next edition of the Financial Pathshala in the coming week. Till then, bye-bye, take care. And for any queries regarding the Pathshala Pro, do reach out to our team members. Thank you very much. Thank you.